सुस्वागतम. I request you all to please settle down. सभी को तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि सभी आराम से बैठ जाइए, सेटल डाउन हो जाइए. Those who are standing, I request you all to please settle down. सगळे जे उभे आहेत त्यांना कृपया मी विनंती करते की सगळ्यांनी बसून घ्यावे आणि जे मागे बसलेले आहेत त्यांना नम्र विनंती आहे की पुढच्या थोड्या सीट्स खाली आहेत, थोडंसं समोर येऊन बसून घ्या. 5 ते 10 मिनिटाच्या आत आजच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या सेशनच्या आपण सुरुवात करणार आहोत. सगळ्यात इम्पॉर्टंट सेशन आपण इथे सुरू करत आहोत. तर कृपया मी सगळ्यांना विनंती करते की जे बसले नाहीयेत ते सगळ्यांनी बसून घ्यावे. जे सगळे आपले गेस्ट उभे आहेत त्यांना नम्र विनंती आहे की सगळ्यांनी बसून घ्यावे. आणि जे मागे बसलेले आहेत त्या सगळ्यांना विनंती आहे की आजचा जो आपला कार्यक्रम आहे हा खूपच महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट कार्यक्रम आहे. तर सगळ्यांनी थोडंसं समोरून पहा, समोरून सगळ्यांनी लक्ष द्या, कारण की खूप चांगले सेमिनार्स आपल्यामध्ये होणार आहेत, चांगले सेशन्स होणार आहेत. तर सगळ्यांनी थोडंसं समोरून पाहावे ही नम्र विनंती आहे तुम्हाला सगळ्यांना. तर 5 मिनिटाच्या आत जोपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू होत आहे थोडं पुढे येऊन बसा. जे मागे बसलेले आहेत कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी जे सगळे आपले गेस्ट मागे बसलेत सगळ्यांना मी विनंती करते थोडंसं समोर यावे. Good afternoon, all of you. Namaskar, welcome, Suswagatam. I'm your host, Mugdha. And this is your host, Anchor Bhavna. And it gives me immense pleasure to welcome you all on Prop Day 2025. So are you all excited, ready for the Prop Day? Well, we can just see the energy. आप लोगों के face पे इतनी प्यारी प्यारी smile दिख रही है हमें. And are we all ready for this spectacular day, everyone? So make some noise for yourself. Give a round of applause for yourself today. Come on, everyone. Thank you so much. So on this note, we are going to start with the education and interactive session. But before that, I want all of you to stand up for a minute. It's a humble request to each one of you. थोड़ा सा टेम्पो मीटर हाई करते हैं, ओके?
सबका लंच हो चुका है? Done with the lunch? So I request all of you to snap and clap. Okay? सबको साथ में snap and clap करना है. Ready? Yes. Okay. Okay? Should we snap and clap? Come on. Like this. One clap. Come on, together. सबकी जो साथ unity में, है come एक साथ on. में. Yes, come on. One snap, one clap. One snap, one clap. Come on, everyone. Yes, we just want to check the unity हम लोगों में कैसी है. And अगर आप ये करते करते अपने चेहरे पे smile रखोगे, so it will be a good thing. Come on, everyone. You, everyone looking super fantastic and super energetic for this day. So on this note, okay, thank you so much, everyone. So Thank you so much. And now I request you to stand only because we'll be starting with the national anthem. Okay? Thank you. Jai. भारत माता की. So now finally it's time to start with the education and interactive session, Prop Day 2025. So I request all the dignitaries to please come and join us on the dais. So first of all, I would like to call Mr. Ramesh Toshniwal sir, Vice President of Prop. Come on, clap all of you. सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्यांचा आवाज आला पाहिजे त्यांच्यासाठी. I request Mr. दर्शनजी चावला, प्रॉपचे प्रेसिडेंट, सगळ्यांच्या टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या. Next, I request the chairman, Kishan Milani. मागून पण टाळ्यांचा थोडा आवाज आला पाहिजे. Next, I request the guest of honor, Ravi Verma sir. टाळ्यांचा आवाज अजिबात थांबला नाही पाहिजे. सगळ्यांची एनर्जी लेवल एकदम हाय हवी आहे. रवी वर्मा सर साठी सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायचेत. आणि आता फायनली आपले चीफ गेस्ट, इंडियाच्या पहिल्या टाउनशिपचे शिल्पकार, मगरपट्ट्याचे सतीश दादा मगर. I want all of you to clap for him. धन्यवाद, सगळे वेळात वेळ काढून आलात आणि इथं उपस्थित राहिलात. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग अँड जॉईनिंग अस टुडे. सगळ्यांनी स्थानपन्न व्हावे, सगळ्यांनी बसून घ्यावे. आणि आता आपण आजच्या कार्यक्रमाची शुभ सुरुवात करत आहोत. वी आर गोइंग टू वेलकम अँड टू वेलकम यू ऑल आय रिक्वेस्ट मिस्टर दर्शन चावला सर टू प्लीज कम अहेड. Thank you to sweet gentle ladies. Gentle ladies and gentlemen, proud privilege for me and a proud moment to be the president of this prestigious organization known as Professional Realtors of Pune, which we call as PROP. I would, on behalf of this organization, welcome Satish Dada Magar sir. I would also welcome our guest of honor, whom we call Pitama, that is Ravi sir. And
how can I forget you all? Without you all, welcoming you all, it will be a half thing as such. Welcome you all, because I know everybody is waiting for this session, training session. Even I'm waiting for this training session. Thank you so much. God bless you all. So thank you so much, Darshanji Chawla. And now it's time for the felicitation. Video first on. Okay. So first of all, there is a video for all of you. There is a prop day video. So I request you to please check the video on the screen. एक प्रैक्टिकल सवाल हमेशा लोग करते हैं कि हमने प्रॉप क्यों ज्वाइन करना चाहिए। प्रॉप इसके लिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि अगर आप हमारा प्रॉप का पूरा नाम ही समझो तो उसका नाम है प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज रियल्टी पुणे में करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए ओवरऑल प्रॉप ने गए साल 12,000 करोड़ से ज़्यादा धंधा किया था। ये प्रॉप ने किया और विद अ रियलिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन हमने 2016 में शुरू की। क्या रीज़न थी? क्योंकि पुणे में ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी को एसोसिएशन नहीं थी और हमारे जो मेंटर है रवि वर्मा जी, उन्होंने इसकी नीड समझी और यशोद और राजू के थ्रू ये एसोसिएशन शुरू हुई। यशोद राजू ने बड़े अच्छे ढंग से अपना रोल निभाया और इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। आज सब्सटेंशियल मेंबरशिप है हमारी और हम NAR इंडिया के साथ कनेक्टेड हैं, जिसके ज़रिए हम नॉट ओनली नेशनली लेकिन इंटरनेशनली भी हमारे कनेक्शंस हैं। हमारे मेंबर क्रॉस सेलिंग और बिजनेस कर सकते हैं सभी सिटीज़ में, बल्कि सभी कंट्रीज़ में भी। इस कंपटीशन के दौर में हम चैनल पार्टनर्स को ऑलवेज अपग्रेडेड रहना चाहिए और कोलैबोरेटिव डील्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और यह सब हमें प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे प्रॉप के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप प्रॉप से जुड़ जाइए और प्रॉप की मेंबरशिप लीजिए। इनिशियली जब प्रॉप फॉर्म हुआ था 2016 में, उसके बाद में आज तक हमने ग्रोथ जो देखी है मेंबरशिप में वो बहुत अच्छी है। आज इतने मेंबर्स जो परफॉर्मिंग है पूना में वो सारे प्रॉप के मेंबर्स हैं और कलेक्टिवली हमने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है। मेंबरशिप ड्राइव में हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे जो वेरीफाइड ही होके कोई भी चैनल पार्टनर इसमें आ सकता है। प्रॉप में अनवेरीफाइड चैनल पार्टनर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसमें हम भी चेक करते हैं कि वो परफॉर्मिंग है और वो कोई गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। ये मेन चीज़ें हैं जो कि प्रॉप को एक अलग स्टैंड करती है। प्रोफेशनलिज्म लाना यानी प्रोफेशनलिज्म पे काम करना बहुत ज़रूरी है और हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। प्रॉप एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विमेन रियल्टर मेंबर्स है। मैं खुद एक विमेन रियल्टर हूँ और मैंने सबसे पहला काम किया जब मैं रियल्टी बिजनेस में आई, प्रॉप को ज्वाइन किया। इससे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जो मेरे खुद के एम्पावरमेंट के लिए, रियल एस्टेट बिजनेस में नॉलेज या अपग्रेडेशन के लिए मुझे बहुत काम में आया। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन रियल्टर हमारी एसोसिएशन से जुड़े और अपने आप को एम्पावर करे, अपग्रेड करे और उनका स्किल डेवलपमेंट हो। ऑल ओवर द नेशन जो लीडिंग डेवलपर्स हैं वो भी आपको प्रॉप के एसोसिएशन को डायरेक्ट इनवाइट करता है। कम लर्न एंड सेल what is the latest product, what is the latest technology, what is the latest trend. Not only in nation, abroad also, दुबई, US, सब जगह से इन्विटेशंस आते हैं। सो एसोसिएशन का पार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉप की वजह से आज मैं मल्टी सिटी में चैनल पार्टनर हूँ। पूना, पनवेल, नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली, कल्याण एंड वेरी सून हरियाणा एंड कर्नाटका आर गोइंग टू ऐड ऑन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएशन का जब पार्ट हो गए आपको बहुत अच्छा नेटवर्क सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं बिल्डर्स के साथ नेटवर्क करने में भी। Thank you so much all of you. And now we are going to start with the felicitation. And for the felicitation, I request Prop President Darshanji Chawla and the Chairman Kishan Melani sir, please come ahead. So first of all, we are going to felicitate the chief guest and the keynote speaker, Shri Satish Dada Magar. Rising Pune growth story continues. तालियां हो जाए एक बार. And on behalf of Meera Thakkar, Vastu Blessings, we are offering
a citron crystal tree for all the members and which amplifies your wealth, business success, health and overall abundance. Give a round of applause, everyone. And now we would like to call guest of honor, Mr. Ravi Verma sir, Chairman Emeritus NAR India, making retailers business a sustainable model. So give a round of applause, everyone. And again, on behalf of Meera Thakkar, Vastu Blessings, we are offering another crystal. Give a round of applause, everyone. So the next is Mr. Harish Shroff, Director, Sales Marketing and Business Development, Natty Group. Today's topic is Beyond Transaction, the Need of the Day. A huge round of applause for him. I request him to please come and join us on stage. लकी ड्रॉ है इसके बाद में, लकी ड्रॉ है इसके बाद। आवाज जा रहा है तुम्हारा? हाँ, बनाओ। And next, we would like to call Dr. Navneet Madhane sir, social influencer, Vastu and Numerology, and today's topic is the hidden influencer in real estate. So give a round of applause, everyone. Next, we are calling Dr. Navneet Mandhane sir. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. Social influencer, Vastu and Numerology is his topic, the hidden influencer in real estate. Thank you so much for coming and joining us. Next is Mr. Akash Agarwal, MD, Krisala Group. Next, Mr. Prashant Gopinath, Director Commercial Kohinoor Group. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Mr. Tarush Atul Goel, Director Goel Ganga Group. Next. Later. Huh? Later on? Okay. Thank you so much all of you. Now it's time for the lucky draw. अभी बारी है लकी ड्रॉ की, तो सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विल बी स्टार्टिंग विद द लकी ड्रॉ नाउ. सो द लकी ड्रॉ में हम आप सभी को एक बुक देने वाले हैं. विल बी गिविंग अ बुक विच इज रियल रिच बुक बाय डॉक्टर अतुल गोयल. Our objective is to create a strong network of people who care about real estate, understand the critical role that real estate plays in the future of humanity, and become equal participants in creating and enjoying the wealth that always results for good real estate development. So, abhi lucky draw की शुरुआत करने वाले हैं, and especially for the lucky draw winners will be getting
Real Rich book by Dr. Atul Goel. So number 49. Raj Tiwari. Give a round of applause for our first lucky winner. Come on, everyone. And I'm requesting Mr. Raj Tiwari, please be on the stage. And the next, number 170, Mr. Amit Prajapati. I'm requesting, please be present on the stage. Come on यार, हमारे lucky winners जो हैं उनके लिए जोरदार तालियां यहाँ पे. And also Raj Tiwari sir is also here. All of you have to clap for them. Congratulations. And the next number is 121. I'm requesting Mr. Satyam Suryavanshi, please be present on the stage. And he became our third lucky winner of this day. Come on, everyone. And okay, number 3, Mr. Sanket Londe. Sir, I'm requesting please be present at the stage. तालियां हो जाए उनके लिए. और यहाँ पे एक announcement है. There are few cars which are not parked properly. त्यात तुम्हाला request आहे की लगेच immediately त्या गाड्या काढाव्या लागतील. So I'm just announcing the numbers. And the next number is 57. Mr. Sujit Sheila, I'm requesting please. Mr. Sujit Shelar. एक बार तालियां हो जाए उनके लिए. Okay, there is a quick announcement. Pay attention. The owner of MH12XE3456, please I'm requesting. Stage के थोड़ा सा पास में आ जाइए. We are having some trouble issue at the parking. Thank you so much, and congratulations to all the winners, those who are lucky today. So now we are going to start with the first address. So the address of guest of honor, Mr. Ravi Verma sir, and his topic is making realtors business a suitable model. I request you to please come ahead. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Good evening, everybody. Good afternoon. And it is indeed a pleasure and an honor to have Mr. Satish Magar amongst us. And also, many people from Credai were here over lunch and are likely to join us later. Nice to see Harish here and Siddharth staying back to participate with us. 8 years ago, Prop started
And I think we were a little less than 50 at that time. Yashodhar was our first president, and we started the association with him. Um, it was an uphill task, but it's heartening to know that there are about 1,600 people who will be in and out of this auditorium till the late in the evening to see the festivities and celebrations of this remarkable journey of 8 years. Uh, since the very beginning, we were very clear that we wanted only professional performing realtors to be members of this organization, and we took care to do that. In 8 years, if fees and entrance charges are any measure of success of an association, I must share with you that today to become a member of our association, it is 4 times what the founding members had paid, and it's likely to continue to increase. We will never charge our members as much as CREDAI does, but that's a different story altogether. I must tell you that since the day we started, we were always encouraged not only by CREDAI, but Mr. Magar was one of the people who has encouraged us always. And at the national level too, whenever we have needed motivation, he's always been there. I remember once we were having a convention in Calcutta, and he had just arrived from Malaysia for a CREDAI function, and he arrived at 11 in the night in Bombay, and he took the 7 o'clock flight from Pune to Calcutta to be with us. So that is the level of commitment Mr. Magar has to organize reality, and particularly for our community, both at the city level and at the national level. We were very clear that whatever we do it as an industry. So we have always kept CREDAI and NAREDCO in the loop of all our activities. And as far as possible, we've tried to do it together. Because I believe that we are all in the same business. We are not in a different business. We are in the business of customer satisfaction. And they do it by way of building products for the consumers and see that they're good products and offer good service. And we do it by offering service both pre and after sales. I do believe that a product might have a warranty period, but service has no warranty period. Okay? And that is a philosophy that will always stand in good stead for all of us if we adopt it as a mission statement, not only of our individual businesses, but as an association. So with this vision in mind, we started PROP. And I must tell you that every member today is RERA registered, has passed the RERA exam, and most important is welcome in any builder's office, not just socially, but to do business in an exponential manner. We at the benefits that we get as an association are so many that there's not enough time to list them all, but we are connected nationally to National Association of Realtors, through which we can do multi-city broking. And I must tell you, a significant part of my own organization's earnings come from multi-city broking. We are exposed to the best practices across the country and internationally. Our members get
visas without any problems, Trump or no Trump, to attend conventions in US every year. We have our own convention every year. I must share with you that next year we'll have about 500 people congregating in Hyderabad. The Asian Realtors Conference will be held in India, and through PROP, you will all be special invitees. And that will be a journey that at the national level would be very significant for us. And PROP being an integral founding member of NAR India is going to play a very big role there. We were very clear that we have to be in step with the latest practices, both in business and in technology, to see that we are able to deliver optimum satisfaction to our customers, both before and after the sale. We have many initiatives in this organization to see that our members keep abreast of the latest what is happening technologically. We also have IIRE, India Institute of Real Estate Education. This is the institution that has trained all of us to pass the RERA exam. And this is the institution that brings the latest best practices to our members on a regular basis. We've been given only 5 minutes, and we cannot even touch upon what you guys want us to talk about. We'll do it some other day. I must not stand in between Mr. Magar and you all. Thank you very much. It is really heartening to see where we have come. Mr. Magar was telling me that initially when we started, it used to be an organization like EAAP, and we started in 1987. We used to get together and call all of them even then to address us. And we were hardly 80 or 90 people at that time. We have 500 people waiting to become members of PROP, Satish, and you'd be happy to know that. And out of the 1,600 odd who have registered, I urge you all that please join the organization and become part of organized reality, not only in Pune, but across the nation. Thank you. Thank you so much, Mr. Ravi Verma, sir. And everyone, please pay attention. The car owner MH12XC3456 BMW, प्लीज़ पार्किंग की तरफ, जिन भी गाड़ियों का नंबर मैं बता रही हूँ, प्लीज़ आप पार्किंग की तरफ चले जाइए, बिकॉज थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है. एंड द नेक्स्ट Hyundai MH14MF1208, ओनर से रिक्वेस्ट है प्लीज़ पार्किंग के यहाँ पे आ जाइए. एंड द नेक्स्ट MH12VV1384, आई एम रिक्वेस्टिंग जिनके भी गाड़ियों के नंबर यहाँ पे अनाउंस हो रहे हैं, पार्किंग की तरफ चले जाइए. सो ऑन दिस नोट वी आर मूविंग अहेड. So next, I request our chief guest, Mr. Satish Dada Magar. His topic for today is Rising Pune, Growth Stories Continue. Mr. Satish Magar is the Managing Director of Magarpatta City Group of Companies, which is in field of township development, affordable housing, retail hospitality and agriculture. A huge round of applause for Mr. Satish Magar, sir. Good afternoon, everyone. Ravi, respected Dais, and all you members. You know, the best time to speak anytime is just after lunch. So you realize, you know, there are seats vacant in the front, but still people sit behind. That means they are gone to sleep. And then when you are, and you can talk anything and get away with it, because most of the people are still digesting what they had. And I heard and I saw the food was good, so I think I can say anything and get away with it. So the topic which was given to me and which I'm going to speak about is Emerging Pune, Rising Pune, and the growth story.
I am a typical Punekar. I have no branch anywhere outside Pune. I don't have an office also outside Pune. Because Pune is Pune. And it is growing. It has grown, it is growing, and it is still going to grow. We have a very large horizon in front of us. A lot of opportunities to come as days go by. Because I personally, I've always been bullish on the city. But we have issues also which have come with growth. We have problems also which have come with growth. So if you look at this whole city and if you, do I speak in English or do I speak in Marathi? Wrong question to ask. If you do a SWOT analysis of the city, या शहराची strength काय? Where does it come from? Why is it growing? One thing we all have to understand, we developers first and you realtors to follow, that Pune is a typical middle class city. The rich and the famous will not come and stay here. Very few will come. The market at the top of the pyramid is extremely small. But because it is a middle class city, खूप मध्यमवर्गीय लोक इथे राहतात, ज्याचं aspiration घर घेण्याचं आहे, that's why this city is growing. This is the first thing which we have to keep in mind. The second strength of the city is that every city has multiple growth engines, has a single growth engine. Pune has multiple growth engines. You look at Pune, IT, education, defense, because defense is also a big market. Southern Command पुण्यात आहे, तिथे इतके हजारो ऑफिसर्स येतात. They start their like career from India and retire back in Pune. Then you have agriculture, and the most important thing is this is again a city which the whole of Maharashtra, if not the country, aspires to come and stay. Because going to Mumbai is out of question. I don't think anyone can afford to buy a house in Mumbai now. It's just beyond our control. So that is why even the balanced districts of Maharashtra would want to come and stay in Pune. That is why the city is growing. Second advantage is water. Though we Punekar use 225, 230 liters of water, दुप्पट कॉर्पोरेशन नॉर्म पेक्षा दुप्पट सव्वा दोन पट आपण पाणी वापरतो, तरी सुद्धा there is a lot of dams, there is a lot of catchment area which makes the city always, water sufficient. There are problems. Today, every day, everyone talks about tankers, everyone talks about, shortage of water. The shortage of water is because of pilferages. It is not because of the capacity of the city to have water. If you take the overall capacity of the drinking water allotment, which is made for the city, I think the city can grow twice the size. That is the amount of water which we have, and Pauna is still not been drawn. It is still used for generating power. And the government is seriously thinking of getting that water towards the city to suffice the need of the drinking water problem. So, all in all, there is tremendous potential to come. IT is growing at a tremendous speed. In fact, today, आजच एक report होता Knight Frankचा की leasing in Pune is as par with Bangalore, which is not true. Bangalore is still far ahead of us. But still, there's a 40% growth which is happening. What does it show? One seat of 100 square feet area which an IT person occupies is a potential buyer for one flat. That is the potential which we have. That is the benefit which we have. And it is going to stay. No matter what Mr. Trump says, no matter what anything happens, the population which is here, which is educated, and then the city is also receptive. It is very difficult for you to migrate to some other city. If you want to go and stay in Bangalore, you want to stay in Chennai, you want to stay in Hyderabad, you have a problem. But if you want to come and stay in Pune, there is no problem. Because the city historically accepts people. It's become a melting pot. So that is why that growth is going to grow. That is going to happen in a big way. A lot of road acquisitions are happening. Actually, nobody taps that market. Land compensation packages have been given by the government. Go and ask them to come and buy a flat here. They'll come and buy a flat here because the amount of money they get
for giving away land for roads and highways and all that, and which is happening in a big way across Maharashtra. That's a big market which is untapped. They come when they want to come, but nobody comes very, diligently, and nobody really goes to them to bring them here. Because we all concentrate on metros. We want to do a show in Dubai, we want to do a property show in Mumbai, but nobody thinks of going and doing a show in Kolhapur and Sholapur. Start doing it. I think that's a big market, because that aspiration level of those people की आमचं पुण्यात घर असावं is big. It is a mindset. आता मुंबईत घर असावं कोणी बोलणार नाही, कारण it is no point in talking. 1,10,000, 1,20,000 per square feet. I mean, you stand on 1 square feet of tile and the value is 1,20,000, which is not there in Pune. Pune is still, I don't know how long it will remain affordable, but today it is still affordable for the middle class segment to come and buy. The moment we start going beyond that, I think we are going to have problem. But as of now, yes, the market is still there. People are still coming. Consumption is still happening, and the city is growing, and it is going to grow. PMRD is a huge area which has come. There is a problem with the DP which has happened. It will get sorted out. There some political issue which has come, but ultimately that area is going to come inside. So there is going to be a lot of development happening in that area. The only problem what we have, the weaknesses what we have in the city is the infrastructure. We are not good. It took me 115 minutes now to come from Magarpata city to here, which is only 18 kilometers. Now, if this is going to be the travel distance, there's going to be problem. But the government is doing a lot of things. There are a lot of initiatives which are happening, a lot of work which has been planned. When it will happen is a different story, but it has been planned. It is already in motion. So, in the coming days, we may see a lot of development happening as far as the infrastructure goes, which is going to be good for the city. So that weakness, again, the second weakness we have is we are not a capital city. So when you are not a capital city, the special funding which comes from the center, the special funding which comes from any other, the state government is a bit restricted, so that infrastructure takes a back seat. But I think they have realized, the political system also has realized the importance of the city. The economy which has been generated here also, they realized that we have to pay attention to the city, and there is a good amount of investment coming in, which is really going to take us forward. The proximity to Mumbai also is a big advantage for the city. I think if you go by the old Mumbai-Pune highway, you don't realize when you have reached Lonavala. It's full from both the sides, and with Chakan coming up in a big way, Ranjangaon coming up in a big way, all these satellite areas where big industrial growth is happening, I think we have good times to come. But when we are talking of all these strengths, what the city has, the weaknesses is only of the infrastructure which we need to which can be taken off. But there are a lot of opportunities for every one of you to do a lot of work, but there are big threats. The biggest threat I was discussing with Ravi is RERA. Yes, I understand all of you have done an exam and you have passed. How exams are conducted in India and how we pass exams, we all know. But are we following RERA in the true spirits? This is something which is going to be the biggest threat for all of us. It is not only the developers' threat, it is also for the realtors. We promise so much. In fact, I don't know how many of you, last 2 days, there's a lot of trending Instagram post by one Shraddha. Have you heard that? No? Somebody from Delhi sent it to me. Now, whether he sent it with concern because I'm a Puneite or mocking me because I'm a Puneite, I don't know. But hear that. If you want to hear that, I will make you hear it before I leave the dais. How she talks about Pune and what she's done, what perception they are creating. I mean, the first time I heard it was hilarious. The second time I was really annoyed. It is downgrading the city. It is downgrading the developers. It is downgrading the realtors. Because the amount of aggression we are having, it is so much that sometimes it goes beyond your entire, comprehension, your power of comprehension. How can you take it any longer? That will create a negative sentiment. I know I have to speak on emerging Pune. We all know because the sales are happening, the schemes are coming up, the marketing is happening, the inventory is low. It's all good.
But the promises what we are making today, everyone, we as a developer make one promise. Now you want to strike a deal, you add to that promise. No tadka marun, puts a promise. And then that person who's buying, he's so intelligent now, and then he keeps all these promises noted down because we talk on the phone, we send emails, we can record everything what is happening, and then they start troubling when time comes. There was never an instance when there was groups being formed, immediately you launch a scheme, and then you have the buyers group being formed. And they're coming out with drawn arms to you, at you. Difficult times, really difficult times. How are you going to handle this? It is no longer possible for you to tell that I have a CRM department and they will take care. They will not listen. They will not listen. They will catch anyone. And these promises, whatever we make, I think with the RERA being stricter day by day, it is being under overhauling now. New RERA 2.0 will come up. I think it is time for us to be extremely cautious in the way we are doing business. It is time for us to be extremely cautious in the way we are promising people. It's because people note down everything. People talk of everything. And then people are there who mock you, and that lady has 1 million viewers. So 1 million people across the country, and how many like I've been sent those forwards, how many I've seen. Everything talks about real estate of Pune. Everything talks about real estate of Pune. So my sincere advice to all you people, including our staffs also, because our staffs also don't behave themselves. But you play a major role, because I always tell my own people that when your mobile is shut off at 6 o'clock, when there's no client available, your mobiles are on. Because now customer wants to talk to you at 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock in the evening, 4, 5, 6 o'clock in the morning. They're spoiled now. But you cannot do away with it. They are customers. They are God. They are giving money, we are surviving. Because they are giving money, you are surviving. So whatever they say is ultimate. We have to listen to them. But with this which is coming and the type of promises we are giving, the type of perceptions which we are creating, what goes up also can come down. So we all have to be very cautious that when we do our business, we do it truthfully, we do it properly, we don't overcommit, we don't make changes what we are supposed to make, and we be true to the customer. Because please understand, and you all know, but let me remind you, that every customer who buys a house with us, a typical middle class customer, it is a 15-20 year relationship, because that is the time they require to pay the loan. It is not a financial commodity. It is not a mutual fund. It is an emotional product. All the good things, the bad things, the sorrow, the joy, the births, deaths, everything happened there in those four walls. And then if anything goes wrong, the first person to blame is us. And the second person now to be blamed will be you. So be aware. हम तो बोलेंगे उन्होंने बेचे, हमको पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है, उससे छूटेंगे नहीं. No, we'll not do away with it, but it is going to come back to us. So just a word of caution that in this emerging city, in this growing city, we also keep all our boundaries intact so that we survive, we grow further, we make good for us, we get good for our customers, because one good customer can get you a couple of customers, one bad customer can take away hundreds of you. Social media, I think it is worth not seeing, because they write so much about you that you also sometimes don't know what is good and bad about you. So it is, but it's a tool. I think you're going to hear about AI also after some time. So you'll understand what the whole story is. But that is the future. And if you have to live with that future, we just have to be true to ourselves. I think nothing more to say, but nice to see so many people around. I was telling Ravi mentioned it, that when they started calling us 25 years ago, there were 70, 80 people. They used to gather at 6 o'clock, 7 o'clock time, come at 8 o'clock in the night. बहुत काम था, कुछ काम नहीं था. उस ज़माने में क्या काम था? कुछ नहीं था, बहुत कम था काम था. क्योंकि the largest developer in Pune used to sell 500 flats a year.
Today, I think they talk about launches selling 500 flats in a month. So that whole times have changed. So you have so many members here, 1,600 people registering. And I think that must not be your total strength, or it is your total strength? So that means you are all extended developer arms which are doing business. But do this, this is the best business to do. Don't come into our shoes. It is not. Because every time somebody comes to me, very few come, but whenever they come, they plot घेतलाय तुम्ही भूमिपूजनाला या ना. म्हटलं तू काय करत होतास? नाही नाही मी रिॲलिटर होतो. मग म्हटलं तेच कर ना. Less investment, less headache, less court cases, less RERA, less problems. Do it that way. So I think that is what you should do. And you're doing a good job, so it makes us feel very happy. So thank you once again for having us here. And please hear to that Shraddha what she said, and don't let this happen in our city. Thank you very much. Thank you so much, all of you, and thank you so much, all the dignitaries. Thank you so much for taking your time out from your heavy, busy schedule and marking this spectacular day. So now it's a humble request to each one of you. All of you can settle down downstairs. And on this note, so yes to everyone, now on this note, we would like to call Mr. Jayesh Patil as Activation Head with Radio Mirchi, Managing Branding, Product Marketing Activation and Event Sportsmanship. So give a round of applause for Mr. Jayesh Patil. Everyone, come on. धन्यवाद सर्वांना पुन्हा एकदा. प्रोफेशनल रिॲलिटर्स ऑफ पुणे यांच्यातर्फे आज हा जो सुंदर कार्यक्रम आपण जो प्रयत्न केलेला आहे, त्यासाठी रेडिओ मिर्चीला तुम्ही पार्टनर केलं, त्याबद्दल पहिल्यांदा धन्यवाद करतो. त्याचबरोबर आज दर्शन चावला सर, रवी वर्मा सर, किशन सर, रमेश सर आणि हरीश सर सर्व इथं आपण प्रेझेंट आहात. काही ना काहीतरी नवीन आपण केलेलं आहात त्याला आणखी पुढे घेऊन जाण्यासाठी. आणि आपल्याबरोबर आम्ही असोसिएट होताना आम्हाला खूप आनंद होतोय. रेडिओ मिर्ची, त्याचबरोबर लव आणि आमचं गाना.com, आमचे 3 आता वेगवेगळे बिझनेस आहेत. आम्ही सुद्धा डायव्हर्सिफाय झालो आहे वेळेनुसार. आणि आपल्या ह्या डायसवर येऊन हे आम्हाला सांगताना खूप अभिमान वाटतं. एकेकाळी घर घेणं हे खूप स्वप्न होतं आणि स्वप्न शोधताना अनेक अडचणी होत्या. पण बिल्डर्स आणि रिॲलिटर्स आपण दोघांनी मिळून हे स्वप्न खूप जवळ आणलं आहे. आणि जवळ आणताना अनेक क्लॅरिटी आणली. आणि क्लॅरिटी आणताना तुम्ही खूप चांगला शब्द वापरला, तो म्हणजे प्रोफेशनलिझम. आणि त्या प्रोफेशनलिझम म्हणून आज ह्या पूर्ण असोसिएशनला एक वेगळं नवरूप आलेलं आहे. आणि अशा संस्थांबद्दल आम्हाला खरोखर आदर आहे, कारण एक शहर म्हणून ग्रो करताना ह्यांचं खूप मोठं मोलाचं योगदान असतं. आम्ही ज्यावेळेस एक माध्यम म्हणून आपल्यासमोर येतो त्यावेळेस आमची पण एक मोठी जबाबदारी आहे. जसं आता मगर सरांनी खूप महत्त्वाचा मुद्दा बोलला, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरनी काही गोष्टी बोलल्या, त्याचे दोन्ही रिपरकेशन्स आहेत, दोन्ही बाजू आहेत. वी कॅन सी बोथ साइड ऑफ द कॉइन. इट इज अ पॉझिटिव्ह वे, इट इज फॉर सम इट इज अ फन, इट इज अ ह्युमिलिएशन, बट इट हॅज अ टू सोर्ड word. So we are very much responsible in all mean and modes of our operation daily way. मी एक सांगेन ॲज अ रेडिओ माध्यम म्हणून, रेडिओवर तुम्ही किती
दररोज आनंदी व्हाल हे मला माहीत नाही, पण मी एक सांगतो की रेडिओ ऐकून तुम्ही दुःखी नक्की होणार नाही. कारण आम्ही अशा कोणत्याही गोष्टी करायला जात नाही जेणेकरून आपल्याला काही वाईट वाटेल. हा ॲड्स तुम्ही जरूर ऐकाल, कारण ॲड्स ऐकल्यानंतर तुमची घरं निघणार नाहीत, घरं खपली जाणार. त्यामुळे मला त्या ॲड्स कराव्या लागणार आहेत त्याच्यासाठी. हा तर एक मुद्दा आहे. पण दररोजचे जे माध्यमांशी आपण जे काही इंटरॅक्ट करतो, वी डू डेली इंटरॅक्ट. अगदी सोशल मीडिया, वी स्टार्ट फ्रॉम आवर मोबाईल फोन टू अ टी पॉसिबल टी Now TV has become a rare commodity in our home. Mobile has taken over already everything as an entertainment. So reaching out every places every now and then. We have local touch. Our local heroes are RJs, and that's how we reach out to you every day. आम्हाला एवढंच म्हणायचं की हा RJ दररोज आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने एंटरटेन करतो. एक न्यूट्रल एक व्यक्तिमत्व असतं त्याचं, जे तुम्ही आत्तापर्यंत ऐकत आला आहात. आणि एखादी गोष्ट तुम्ही नवीन घेऊन, जशी आज प्रॉप रिॲलिटर्सनी आमच्याकडे खूप नवीन टाईप घेऊन आलं की आम्ही अशी गोष्ट करतोय, तर आमच्यासमोर एक नवीन चॅलेंज तुम्ही दिलं की हा डायनामिझम कसा लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. पुण्यापर्यंत मर्यादित न ठेवता पुण्यापासून पुण्याचा जिल्हा असेल किंवा कोल्हापूरसारखं प्रगत शहर असेल जिथून तुम्हाला लोक हवी आहेत, अशा ठिकाणं असेल, आम्ही हा पुरेपूर प्रयत्न करतो. पण आज मी सांगतो जाताना नक्की इथून आपल्यासाठी जर आपण आपल्या व्यावसायिक वाढीसाठी जर विचार करत असाल, तर रेडिओ नुसता रेडिओ राहिलेला नाही, तर रेडिओ त्याच्या पलीकडे पोहोचलेला आहे, डिजिटली आहे. तुम्हाला अनेक इन्फ्लुएन्सर्स आहेत आमच्याकडे जे तुम्हाला भरपूर ठिकाणी मदत करू शकतील आणि क्रिएटिव्ह थॉटनी आपलं कॅम्पेन प्लॅनिंग करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला मदत करू शकतो. मी पुन्हा एकदा प्रॉप असोसिएशनचे धन्यवाद मानतो. आम्हाला इथे तुम्ही टाईप केलात आणि इथं वेळ दिलात बोलण्याचा, त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. Dhanyavad, sir. And next, I would like to call upon stage Mr. Harish Shroff, sir. Harish, sir, one of the most popular name in the CPs, legacy of over 23 years of experience. He started his career with Nyati Group in 2000 June, and since then he has a strong pillar in the organization growth. So a huge round of applause for Mr. Harish, sir. So his topic is Beyond Transaction, the Need of the Day. It's always good to start on a wrong introduction. That's amazing. So yes, she got it right, but I have been born and brought up by Nyati Group, so I was not a channel partner. So, but still, I am Harish Shroff. I am Director Sales and Marketing, Nyati Group. And it's absolutely a pleasure to be among all of you. And a happy Prop Day to all of you. So a round of applause for all of you, please, once. Well, आप लोग अभी सोच रहे होंगे एक और रियल एस्टेट, एक और टॉपिक, एक और ज्ञान. मैं ये सब नहीं करने आया हूँ. मेरा टॉपिक ही बहुत अजीब है. It's a very unique topic. It's beyond emotions. It is something I'm not going to discuss about carpet area. It's about heart area. And I see this with full pride because it's coming from me where I'm not just 2 years in the industry or 3 years. Last week, I completed 25 years with Nyati Group. And under the leadership of our chairman, Dr. Nitin Nyati ji, and of course, my mentor is sitting here, Sharad Goyal ji. He was the one who trained me. Thank you, sir. Well, today, real estate is just not a product, it's an emotion. It is something which is now judged together as a service, as an emotion. आप सबको पता होगा कि as developers हम अभी site पे clients को नहीं भेजते हैं. We always want to keep them to our experience center. So what is that? Right from your first person as a guest relationship who is offering to welcome the client with a smile, right from your brochures, which are larger than life, which are walkthroughs, which are hugely animated, which show such amazing BMWs and Mercedes entering every project. But the sales experience, what your sales personnel gives, creates a memory for the consumer. And that is what becomes his experience. So my friends, let's all understand so much of experience sitting in this room. I can only tell you that real estate is no longer just a product, it's a mix of service, product, and experience. Throughout the next 2 years, 3 years of the journey, one thing will happen is only will set you different.
लेट्स गो 20-25 साल पहले चलते हैं. आप सब ने काफ़ी बिजनेसेस किए हैं. 20-25 साल पहले क्या होता था? एक सेलर होता था, एक बायर होता था या डेवलपर या सेलर, और एक ब्रोकर होता था. ये जो वर्ड ब्रोकर था ये 20-25 साल पहले इवॉल्व हुआ. टुडे पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स, यू सी द एवोल्यूशन हियर. पहले ब्रोकर को बायर और सेलर से ज्यादा सब पता था. Whether it is a requirement, Vastu, full knowledge. Engineering, full knowledge. Builder से ज़्यादा उसको full knowledge. But क्योंकि transaction important था, आज transaction important नहीं है. Today emotion is required, that gratitude is required. कि आज मेरी सर्विस को कोई appreciate करेगा, आज मेरे suggestion को कोई validate करेगा, आज मेरे प्रोडक्ट जो मैंने दिया उस घर में वो रहेगा. एंड एवरी टाइम, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. अगर 15 साल पहले भी आपने कोई एक घर बेचा होगा, उसके बालकनी में आज भी कपल बैठ के वही बोल रहा होगा कि XYZ ने मुझे एक घर बेचा. तो ये लेगेसी हम सब कैरी फॉरवर्ड करते हैं. दैट इज फॉर श्योर. वेल, अभी हम आज आ जाते हैं. आई हैव सीन बिल्डिंग्स टर्न इनटू कम्युनिटीज, customers turning into our friends. But one thing, and as brand partners, now, today you all stand, not just brokers, today you all are brand partners. So that is what the industry has recognized with all the realtors sitting in this hall today. And yes, जैसे सतीश दादाजी ने बोला कि मैं उसमें थोड़ा ऐड करूँगा कि क्लाइंट 15-20 साल लोन लेता है, बट जब भी वो घर लेता है उसमें 10-15 साल की सेविंग भी होती है जो वो बिल्डर को या 20% डाउन पेमेंट देता है. सो टोटली ही इज गिविंग यू 30 years ऑफ हिज लाइफ. 30 years ऑफ हिज लाइफ फ्रेंड्स इज अ वेरी वेरी बिग टाइम. और जैसे दादा ने बताया था कि ये फ्लैट में या ये इन्वेस्टमेंट में काफ़ी इमोशंस आएंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, नॉट सो बुरी चीज़ें होंगी, बट आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये सब में किसी का बच्चा पैदा होगा, किसी के डॉटर की वेडिंग होगी. देयर आर सो मेनी इमोशंस व्हिच विल कम. सो आई पर्सनली बिलीव दैट रियल एस्टेट इज बियॉन्ड ट्रांजैक्शन. कोविड, आप सबको तो कोविड याद ही है. सबसे ज़्यादा सेफ हमको हमारे घर ने रखा था, एंड एवरीबडी रिमेंबर्स दैट. एंड उसके बाद जो एवोल्यूशन आया रियल एस्टेट में, nobody can forget the amount of demand which came into housing is a real case study even today. So as we speak, friends, it's just that you have to represent us very accurately well. My only humble request as a developer here is to represent the true facts. Yes, I do agree कि y'all are driven by recognition and remuneration. But please, एक humble request है कि percentage के लिए अपने ethics को मत compromise कीजिएगा. Because sometimes what happens is that people in the greed of growing faster will make commitments which are beyond realism. And that sometimes could be only a very short-term relationship. But if you all want to grow in life and become legacies, and it is less a fact, and in fact in my last channel partner meet also, I have seen individuals here sitting very much here become organizations, and organizations becoming institutions. So this is the capability which you all have. My only thing is take a balance between ethics, between ethos, and represent the right product and represent the right advice is what I say. So my only request to you leaving the dais is thank you so much for having me here, although I would like to keep it very brief. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much, sir. So now there is a video for all the sponsors. So all of you can check the video of all sponsors.
Okay, so now we are moving towards for the presentation by our food sponsor, Yashta Group. So give a round of applause for Yashta Group here. का टाइम हो. Namaskar. Good afternoon, all prop committee member, all prop members. ह्या ठिकाणी मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन नाही दाखवणार आहे. एका तरुणाची स्टोरी सांगणार आहे मित्रांनो या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून. तो तरुण म्हणजे यशदा रियाल्टीचे CMD सन्माननीय वसंत काटे सर. जो तरुण 21 वर्षापूर्वी सिव्हिल इंजिनिअरिंगची पदवी घेऊन बाहेर पडतो आणि यशदा रियाल्टीची स्थापना करतो. मित्रांनो 7,000 स्क्वेअर फीटच्या बांधकामापासून सुरुवात केली जाते 21 वर्षापूर्वी आणि आज पुनावळेमध्ये 15 एकरमध्ये 32 लाख स्क्वेअर फीटचा एक प्रोजेक्ट तयार होतोय अपकमिंग प्रोजेक्टमध्ये. आणि ह्या जर्नीमध्ये 21 वर्षाच्या जर्नीमध्ये जवळजवळ 30 प्रोजेक्ट आम्ही हँडओव्हर केलेले आहेत आणि जवळजवळ 7 प्रोजेक्ट आता चालू आहेत. या 30 वर्षाच्या जर्नीमध्ये सांगायचं झालं तर 2 गोष्टी आहेत ज्या यशदाला आयडेंटिफाय करतात. यामध्ये आहे टाइमली पोझिशन आणि क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन. टाइमली पोझिशनमध्ये सांगायचं झालं तर आत्तापर्यंतच्या हिस्ट्रीमध्ये 30 प्रोजेक्ट कंपनीने कंप्लीट केलेले आहेत. या 30 प्रोजेक्टमध्ये व्हॉट एव्हर कमिटमेंट वी हॅव रिटन इन द ॲग्रीमेंट वी नेव्हर गेट 1 डे लेट. आत्तापर्यंत असा एकही प्रोजेक्ट नाही की आम्ही 1 दिवस कमिटमेंट केलेल्या दिवसाच्या नंतर आम्ही पोझिशन दिलेलं आहे. मित्रांनो कोविडमध्ये जवळजवळ 10 प्रोजेक्ट चालू होते. 10 प्रोजेक्टच्या हिस्ट्रीमध्ये कुठलाही प्रोजेक्ट लेट झालं नाही आणि वेळच्या वेळी सगळे 10चे 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेले आहे. हे आहे टाइमली पोझिशनची कमिटमेंट. मित्रांनो एक वेळ अशी होती, थोडक्यात सांगतो, मोशीला डुडुगावमध्ये 1000 फ्लॅटची स्कीम चालू होती आणि ती स्कीम चालू असताना कोविडची सिच्युएशन आली होती. पण सरांनी मध्यमवर्गीय कुटुंबाला जी कमिटमेंट केली होती ती कमिटमेंट सरांना पूर्ण करायची. ज्यावेळेस मार्केट ओपन झालं त्यावेळेस बाय इयर जवळजवळ 300 एम्प्लॉई उत्तर प्रदेशमधून एअर बाय इयर मागवले गेले आणि काम पूर्णपणे वेळेत पूर्ण केलं. 2.5 वर्षाच्या कालावधीत तो प्रोजेक्ट सेल्स करून हँडओव्हर करून कंपनीने ती एक स्वतःची पोझिशन काय असतं आणि कमिटमेंट काय असते हे दाखवून दिलं गेलं. त्यानंतर मित्रांनो क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन म्हणून कंपनीला नावाजलं जातं. क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन काय असतं? आमची स्वतःची इनहाऊस टीम आहे आणि इनहाऊस टीममध्ये क्वालिटी कन्स्ट्रक्शनचे खूप काही क्वालिटीचे चेक पॉईंट आहेत. आज जर विचारलं गेलं कुठल्या कस्टमरने की ह्या 7व्या फ्लोअरचं मला तुम्ही डिटेलिंगमध्ये दाखवा, आजही कुठल्याही साईटवर जर गेलात तर यशदा रियाल्टीमध्ये तुम्हाला कुठल्याही फ्लोअरचं डिटेलिंग ऑडिट चेकशीट तुम्हाला दिसलं जाईल आणि ही आमच्या कस्टमरकडनं मिळालेली पावती आहे. आज कुठल्याही प्रोजेक्टमध्ये गेलात तर गुगलचं रेटिंग जर बघितलं तर खूप चांगल्या पद्धतीचं नियर अबाउट 4.8 4.9चं गुगल रेटिंग आहे. कस्टमरचं दिलेलं रेटिंग आहे. मित्रांनो ह्या 2 गोष्टी वाखाणण्यासारख्या आहेत. कंपनीचं सर सांगायचं झालं तर आज कुठलाही प्रोजेक्ट आम्ही लोनवर घेत नाही आहे. सगळे प्रोजेक्ट हे डेट फ्री आहेत. लोनवर कुठलाही प्रोजेक्ट नाही आहे. ही कंपनीची स्ट्रेंथ आहे मित्रांनो. आणि सांगायचं झालं तर खूप चांगले प्रोजेक्ट आम्ही कंप्लीट केलेले आहेत. त्यामध्ये लोहगावमध्ये कंप्लीट केलेले यशदा स्क्वेअर आहे. पिंपळे सौदागरमध्ये कंप्लीट केलेला आमचा ट्रायव्हर्स आहे. विशालनगरमध्ये कंप्लीट केलेला यशदा एपिक प्रोजेक्ट आहे. आणि जस्ट आता सुप्रीम हा प्रोजेक्ट आम्ही डुडुळगावमध्ये कंप्लीट केलेला आहे. ह्या 4 प्रोजेक्टला SHA अवॉर्ड भेटलेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यशदा सुप्रीम सारखा प्रोजेक्ट 1100 फ्लॅटची स्कीम तब्बल 2.5 वर्षामध्ये सेल्स करून आणि हँडओव्हर करून आजही लोकांच्या समाधानाला उरलेली ही आमची स्कीम आहे. त्यानंतर
आज कंपनीकडे ऑनगोईंग जे जवळजवळ 7 प्रोजेक्ट आहेत याच्यामध्ये वेगवेगळ्या लोकेशनला PCMCमध्ये खास करून बानेरला आहे, रावेतला आहे, मामोडीला आहे, पिंपळे सौदागरमध्ये आहे, पिंपळे निलकमध्ये आहे. ह्या वेगवेगळ्या लोकेशनला आमचे प्रोजेक्ट चालू आहेत. आणि खरी स्ट्रेंथ आज रिअल्टरला जर खरी स्ट्रेंथ जर पाहिजे असेल किंवा ह्या अपकमिंग 2025, 2026 आणि 2027मध्ये कंपनीचं जे प्रोजेक्शन आहे आणि तुमच्यासाठी जो ग्रोथ पोटेन्शियल आहे ते माझे कलीग कृष्णा सर तुम्हाला एक्सप्लेन करतील. कृष्णा सर. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आत्ता आपला ऑनगोईंग जो प्रोजेक्ट चालू आहे यशदा अर्संग विच इज लोकेटेड ॲट रावेत लोकेशन, ज्याच्यामध्ये आम्ही इन्व्हेंटरी आणले 2, 3 and 4 BHK विथ कमर्शियल. नेक्स्ट आहे आपला प्रोजेक्ट मामोडी लोकेशनमध्ये 2 एकरचा प्रोजेक्ट आहे. त्यामध्ये आपला पूर्ण रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट आहे. थर्ड वन इज ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आहे आपण विंडसॉंग, तो पण रावेत लोकेशनला आहे. बाणेर पॅन कार्ड क्लबला आत्ता ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आहे जुबली हिल्स. त्यानंतर गणराज चौकात बाणेर लोकेशनमध्येच आपला कमर्शियल प्रोजेक्ट आहे YBZ. वॅन्टेज 21 हाही प्रोजेक्ट आपला आहे पिंपळे सौदागर लोकेशन्समध्ये. आता अपकमिंग प्रोजेक्ट्सबद्दल बोलूयात आपण. त्यामध्ये नेक्स्ट आम्ही घेऊन येतो आहे आत्ता 2025मध्ये प्रोजेक्ट वाकडमध्ये 3 एकरमध्ये 2, 3 and 4 BHK 400 इन्व्हेंटरीज घेऊन येतो आहे तिकडे. नेक्स्ट असेल रावेतमध्येच 3 एकरचा प्रोजेक्ट आहे 2 and 3 BHK 550 युनिट आणतो तिकडे. हार्ट ऑफ द पुनावले सगळ्यात ह्यूज प्रोजेक्ट आम्ही नवीन आमच्या लाईनअपमध्ये आहे तो असेल हायवे टच यशदा EO 15 एकरचा प्रोजेक्ट असेल, ज्यामध्ये 200 शॉप्स, 200 ऑफिस स्पेसेस आणि को लिव्हिंग स्पेस आहे तिकडे आणि 1800 युनिट आणतोय रेसिडेन्शियल. नेक्स्ट 2026मध्ये लाईनअप असणारे प्रोजेक्ट आहेत ते रावेतमध्ये नेक्स्ट असेल तो 4 एकरचा प्रोजेक्ट 2, 3 and 4 BHK 700 इन्व्हेंटरीज तिकडे पण आणतोय आपण. नेक्स्ट आहे सूसमध्ये 5 एकर आहे 2, 3 and 4 BHK तिथेही 700 युनिट्स आणतोय. लोहगावमध्ये 6 आणि 7 एकर असे टोटल 13 एकरमध्ये आम्ही प्रोजेक्ट आणतोय. जवळजवळ 1500 युनिट तिकडेही असतील. पिंपळे सौदागर त्यानंतर पिंपळे सौदागरमध्ये जवळजवळ 7 एकर आहे 3 and 4 BHKचा प्रोजेक्ट असेल. 2027मध्ये आपण थोडंसं टाउनशिपला पण जाणार आहे. त्यामध्ये त्याच्या आधी पहिला प्रोजेक्ट असेल तो किवळे लोकेशनला 12 एकर्समध्ये 2, 3 and 4 BHK. 2027मध्ये काही टाउनशिपचे प्रोजेक्ट आम्ही लाईनअप केलेले आहेत. साळुंब्रे लोकेशनमध्ये 100 एकर आम्ही टाउनशिपमध्ये जाणार आहोत. त्यानंतर लवळेमध्ये 100 एकर आणि नांदेमध्ये 50 एकर असं आम्ही मार्केटमध्ये न्यू लॉन्चेस बॅक टू बॅक 3 वर्षामध्ये नवीन लॉन्चेस येतात आपले. सरांनी आत्ता मगाशी सांगितलं आपण आता 30+ प्रोजेक्ट हँडओव्हर केलेले आहेत आत्तापर्यंत मार्केटमध्ये. संदीप नेक्स्ट स्लाइड. Okay. Okay, thank you so much. All prop member, thank you so much. Thank you so much to Yashda Group. Thank you so much for your insightful session. And the next speaker, I request Mr. Shripal Gandhi, sir. Shripal Gandhi is a trailblazer entrepreneur ecosystem, a highly accomplished business leader, serial entrepreneur, and a transformative coach and mentor. With over
2 decades of experience, Shripal sir has built and scaled business, empowering more than 6,200 founders and CEOs across 113 industries. A huge round of applause for Mr. Shripal Gandhi. His topic for today is PropTech Revolution, leveraging AI in real estate. Share. Can you get the screen? Yes, it's here. So first of all, I want to acknowledge, because I was talking to a few channel partners, and as Harish also mentioned, brand partners, and it was an interesting journey for someone who is not technically a part of real estate space, but to watch this entire journey from agent to broker to channel partner and now a brand partner. What I want to really acknowledge is you all have built your businesses based on 3 R's. First, relationships, which is a very, very core part of what you do as a channel partner. Second, reputation, that अपनी जुबान की वैल्यू एक बार वर्ड दे दिया तो दे दिया. Because people want this. And the third R is the results, what you have produced, the number of flats you have sold, the number of villas you have sold, the number of plots you have sold. And I really want to acknowledge this before even I deep dive into my topic, which is AI. AI सब चीज कर सकता है, ये 3 चीज नहीं कर सकता है. Relationship build नहीं कर सकता है, reputation create नहीं कर सकता है, and the kind of results human being can produce, it cannot do. So first of all, a huge round of applause to all you channel partners. And with that, let's begin and crack the code. So, but just by a show of hand, how many of you would like to scale your business smarter? Just raise of hand, yeah? Fantastic. And how many of you would like to close more deals in a best and the fastest manner? Raise of hand. So let's see how we can crack the code by use of AI as a tool and AI as a power. So did you know 70% of the home buyers begin their journey online? So today, not having digital presence is not an option, not only for a developer, but also for a realtor. 68% of the leads go cold due to poor follow-up. एक बार call कर दिया, phone नहीं उठाया, second time now it kind of fizzles out. And it is said, and this is not me, this is data, Gartner research has said that across the industries, 85% of the communication, customer interaction will be managed without a human by 2027. अपने industry के, what are the current realities? You know, high competition, low differentiations, inconsistent lead generations, long design cycles. As Harish also mentioned about, you know, not only they invest, they give you a part of their saving as an upfront down payment of almost 20%, but almost you still end up serving them for next 20 years. So design cycles are typically very long, follow fatigue and low tech adoptions, leading to lost in revenue. Imagine, what if you had a 24/7 assistant, property researcher, marketing head, and closing coach, all roll into one and working for you. That too, free, and someone who does not ask salary hike. So here it is, ladies and gentlemen. What AI can do, only AI can do, which is the smartest assistant you can have. As a realtor, you can use AI to write multiple listing captions, slogans, convert, you will see it today. I'll give you also live demo. Converts raw layouts into realistic visuals, raw sketches also into realistic visuals, and based on the visuals, create video pitch in a matter of few seconds and turn your brochures into video ads. We used to hire people or agencies for this. Abhi tak to aise hi ho raha tha. And now you can open 4 tabs on your Safari or Chrome browsers and AI can do the rest. So this, you all know how fast the AI is growing. It is not anymore a future. It is AI is already the present, is what I want to tell you. And that's why they say, you know, ain't just a buzzword, which is AI here.
here I want to share with you something, how fast the world is changing. पहले के ज़माने में, even as a realtor or as a developer, to create $1 billion worth enterprise, कितने लोग लगते? And see, the times are changing. This is a Sam Altman, the founder of AI, OpenAI, talking about how the times are changing and how $1 billion unicorn can be built. Highly performant, smaller teams, thanks to these tools and these technologies, can be able to do so much more. Is that a trend you're seeing from the startups growing around y'all in Cerebral Valley? We're going to see 10-person billion-dollar companies pretty soon, like billion-dollar valuations. And the thing that in my little group chat with my tech CEO friends, there's this betting pool for the first year that there's a one-person billion-dollar company, which would have been unimaginable without AI, and now it'll happen. So he said, now we can build, can we have the lights please? We can build one-person company which can actually be valued at $1 billion. That's how the AI is changing and the world is changing right now, and including the real estate landscape. Now, you would have seen when you show a property to any customer, and let's say typically it's a bare shell property. And as you heard from previous speaker, real estate is more of an emotion. It does not have an emotion. So would you like to see how can we add emotion in that bare shell property? Yes? Let's do it live. Let's do it live. How can you convert an empty flat into look, move to ready flat? So I'm just going to show you something very, very powerful, because empty flats don't attract attention online. But solution is you can upload the raw photo and let it do the rest. Let AI do the magic. So I'm going to do something very, very interesting here. It's a tool. I'm going to upload an image. Yes, I'm going to upload an image which is a raw image. Yes, you can see this. This is a raw image. I just uploaded it in front of you. Now, I choose virtual staging. This is how the properties across the world are being sold right now, whether it is Europe, whether it is US. And इसके लिए language की ज़रूरत नहीं है. You know, you can do this. You can be speaking in Marathi. You can be speaking in Hindi. Language is not a barrier. Education is not a barrier. इसके लिए engineer होना भी ज़रूरत नहीं है. All you need to know is कौन सा tool use कर सकते हैं. And let's look at the magic. Are you ready? 1, 2, and 3. Now I just uploaded the image, and what does it do? Now it is asking me to select a space. Is it a living room, bedroom, or dining? Let's say I want it to use as living room. You can also choose the themes. Do you want to choose modern, bohemian, coastal? Let's say I choose modern theme. Yeah? Let's say I choose modern theme, and I can generate an image, which is an image you can show it to your customers, because पहले अभी तक क्या हो रहा था? When you talk to customers, you will say, this is a bare shell, but this is how it will look like. यही terminology होता था ना? This is how it will look like. But when you use AI, now you can tell them, this is how it is going to feel like. And transactions only happen when emotions are involved. Yes? Let's see now what it has come up. What kind of decor it has come up. Yes, this was the bare shell. And look at this. Like it? This is what AI can do. And how much time it took? 10 seconds se zyada time nahi laga. 10 seconds is what it took. But now when the client comes, you say this is the bare shell, but this is what it will look like, and it will feel like. Very powerful tool. It's called reimagine.ai. Now, I also want to share with you something, because it is not only about just sharing the picture. Do you agree? We all love videos. What if you take this image? Abhi image liya, right? Would you like to see, let's say if you were to buy a property, would you like to see only an image, or you would like to see a video? Video? So isko video banaye. Let's create this into a video form, right? So what you do now is you go to another tool. It's a very powerful tool. It's called Runway. Here, all you need to do is go and upload the image what you created. Yes, upload the image what you created. And then all you need to know is what kind of prompts, or what we call in our community, hypercodes, we need to add. Yes, hypercodes you need to add. And that's it. Here I uploaded the image. I choose, I can say, okay, crop. This is cropping is done. And it will ask you, kitna lamba video chahiye? 5 seconds chahiye, 10 seconds chahiye. So you can select, let's say I choose 10 seconds. I drop the prompt and I say generate. And now it is processing it.
And what it does is it will create the video instantly in less than 10 to 20 seconds, which you can show it to your client, which you can have it on your website, which you can have it as a part of your listing. Yes? So while AI is processing it, I'm just going to show you how it looks like, here right now in front of you. Yes? Here you go. Imagine this. This is the video which is created right now. It's a 10-second video only, 10 second ka hi hai, but it makes you feel a lot more with the property than just how it will look like. So it has transcended beyond logic, and now the heart is connected here. Would you agree? Awesome. So next one is the tool you might be hearing. Most of you might have used it, but there is a method to this madness. How can you use this tool? Why everybody knows about ChatGPT, but somebody gets some results, somebody else gets outstanding results? It's a secret of prompt engineering. You need to know how the prompt works, how the AI works. So let's look at this. This is, by the way, a Redfin, which is a $1 billion real estate broking firm. उनका CEO बात कर रहा है. Let's see what he has to say. Some of our agents are using this technology to follow up with customers. Not all the people who go into real estate are William Shakespeare, and so they struggle with just composing an email that's grammatically correct. And if you give ChatGPT just a few facts about what's going on with this customer, you get a nice email on the other side. So I think ChatGPT is going to change online marketing just generally. More people are going to use it to create content when they're not good writers themselves. So what it did is, let's say you have a customer who came, they maybe came to you, but after that they stopped picking your calls. Or maybe another customer who came, said, I'm very interested, let me get my family, but after that there is no response. Or someone who said, I want to buy, but they are not moving. See, sales get closed when there is an urgency and when there is a scarcity. These are the two fundamentals nuggets when sale happens. Now, how do you create that and how do you communicate that? Simple prompt like this. You could take a picture of the simple prompt like this. If you just throw in the kind of results it's going to produce, it's going to blow your mind. Just the kind of results. I wish I could keep going demos to all, but I think prompt gave me a very different challenge, which is maybe I think is easier to build a township than that. But instead they said 1960s AI were introduced in the world. Aaj kitna hai? 2025. So how many years? 65 years. They said 65 years you have 20 minutes to present, and that to get it hyper-focused to all the realtors. So this is what we are doing right now. But you get an idea how even this kind of prompts can be used when it comes to specific problem. Pricing का issue है. कोई customer ने बोला कि ये project की या flat की price ज़्यादा है. So how do you convince that? Because you, with your, what I call, with you GPT, you can only think so much. But when you choose a chat GPT, it has access to all the data. It has access to the entire web. वो जो output produce करेगा, जो reasons देगा आपको, वो बहुत solid रहेगा. But again, after that, you use your UGPT and then you present it to your customers. So this is the power of chat GPT. Another powerful tool I want to share with you is how many of you actually create presentations? Just raise your hand. When you customer को जब दिखाते तो presentations, yes? Whether it could be a flyer, brochures, yes, or a PDF file. Either a developer has it, or if developer does not have it, this is something what you can do it. This is something what you can do it. All you need to do is look at this, and you can time it. There is a tool which is called as Gamma. Just go and throw in this prompt, and I say, it says edit the prompt, okay, create a presentation, and I say continue, and 1, 2, 3. Now you can choose, time laga lena abhi. You can choose the theme. You want a light theme or a dark theme. Let's say I want a dark theme, and it says generate, right? And now a typical graphic designer in your office, first of all, they have to think. Secondly, they have to put together the entire brand identity. Yes, color, brand, color palettes, typography, and then create the whole thing. Now, did you see this in how many seconds? Kitne second mein this is creating the entire presentation of your project, which is, by the way, this project is downloadable. Yes, this is downloadable. You can download this and edit it also. Yes, this can be downloaded or this can be edited here. Here you go. I'm just going to show you this. Now imagine. How does it look?
Awesome. Introducing Serenity Residences Bahrain, and you can keep going and just see the quality of the output, what it is created, yeah? It will pull the images, ये सारे vectors, it will pull on its own, project USPs, floor plans, location map, and ये सारी चीजें you can edit it. कितना time लगा? Less than 20 seconds. Less than 20 seconds, an entire deck is ready. How are we doing? Are you all with me so far? Yes? Beautiful. Now, another tool, right? How many of you have clients who speak multiple languages? Yes? Marathi mein baat karte, Hindi mein baat karte, English mein baat karte. Yes? Or maybe some of the southern languages. Yes? How many of you have clients, multiple of them? Okay. So imagine today, you as a realtor, you as an agent, you have to create content. आपने एक बार कोई चीज बना ली, कोई content piece बना लिया कि ये project क्यों करना चाहिए या why they should book a flat in this project, which you created. Now, you don't need your presence. I'll show you a clip. See what it says. This is called Hey Jane. It's another next level tool wherein you can customize a lot of things without your actual presence. Look at this. Looking for your dream home? Welcome to Skyline Crest. Premium 2 and 3 BHK flats, just 2 minutes from the Eastern Expressway. Enjoy spacious layouts, modern design, and natural light in every room. Plus, top-notch amenities. I could keep going on and on, but do you know something? This is not me. I did not create this. This is trained based on my gestures, based on the way I speak, based on the body movements I have, based on the way I blink my eyes, based on the facial expressions I have. Based on it created this. All you need to do is, this is the project, this is the flat, and go. And it will create on its own a beautiful video. You can decide कितना time का चाहिए, 10 second का चाहिए, 20 second का चाहिए, 30 second का चाहिए. And boom, your video is ready. Like it? So very, this is where the world is changing, guys. You know, and I really feel this can be a game changer. Satish Dada already talked about why Pune is an opportunity, like why this is a big opportunity for realtors. And I feel there has never been a better time than this to scale your game, to scale your business, if you just know how to use this tech. ये simple tech है, इसके लिए ना कोई engineering की degree जरूरत है, ना कोई specific language आनी चाहिए. Basic अगर understanding रहेगी, तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो. Yes? Now I want to ask you, this is prop, right? This is called prop, right? Do you have a jingle of prop? Nahi? Hai ya nahi hai? No? Okay. Shall we create one? Yeah. Shall we create? Yeah. Arey, shall we create? Yeah. Okay, that's what like it. So what I'm going to do is, I'm going to do something very, very interesting. And I'm copying something which I created yesterday just for this. I said, let's have some fun. And I'm going to drop this here, okay? I'm going to drop this, and I say create, okay? Now you can time it. Yes, now you can time it. How many seconds it takes, and let's see what is the magic it has created, yes? Let's see, it is processing. Can you see that? It is processing, and let's see what it has actually created. Ready to hear? Prop Day का जश्न मनाइए, सपनों के घर हम सब बनाए. पुणे के दिल में है रोशनी, यहाँ से शुरू है कहानी. Prop Day है अपना जुनून, सपने देखे और बने अफसूस. आगे बढ़े तेजी से हम, हर रास्ते में हो अपना दम. Everyone, give yourself a big round of applause. Congratulations to Prop. इतनी पहचान, सुकून और सुविधा का है अरमान. I wish I could keep going on and on and on. What I want to tell you is this is the power of AI.
And you know the best part, ask me why. Ask me why. Why? Because ये prop day के लिए नहीं है, you all realtor, you should create this. अभी सबसे पहले आज इधर से जाने के बाद you should create your own personal jingle, your own personal anthem, your own personal song what represents your organization, and all it is going to take is less than 30 seconds. अगर ये नॉर्मल बनाते थे ये क्वालिटी का ये बिट्स के साथ विद दिस काइंड ऑफ वॉइस, हाउ मच यू वुड हैव स्पेंट? टेल मी, हाउ मच यू वुड हैव स्पेंट? Yeah, 20K to maybe few lakhs depending on the artist and the voice which you choose. Here you can customize every single thing, and this is a very, very powerful tool. All you need to do is go there, type suno.com, S-U-N-O, suno.com, and that's it. You will be able to just write the prompt and take it. So what I wanted to share with you before I sign off is the world is changing fast. Real estate landscape is changing even faster. And in these times, we all need to embrace technology. And the best part of this new age technology is uske andar jaane ki zarurat nahi hai. Somebody else is already doing the job. So do we want to be people who like to study roots, or we want to enjoy the fruits? If we want to enjoy the fruits, let's enjoy the fruits. And thank you so much, ladies and gentlemen. I have put together something. In the event, if you want some specific tools, just scan this QR code, and you will get 30 plus tools which are exclusive to real estate as a space, real estate as a community. Yes? Excellent. So thank you so much, everyone. It's been a true pleasure to be here and be a part of a very, very interesting bunch of audience and all of you. And I have thoroughly enjoyed creating it over last couple of days. I really hope आप इसको use करें. The real value will be, it's not कि इतने सारे tool, real value इसकी एक tool मिल गया आज सुनो, उसको छाप दिया, तो मजा आ जाएगा. Yes? So with that, thanks once again, ladies and gentlemen. Wish you all the best. Keep rocking, keep hyperscaling. Yes. This is a question for my family. Yes, please. If we want to do a training, Huh. how many hours training can we do? If we want to do the training, before that, we should define the objective of training. So getting hands-on, right? So it's a workshop, which means, along with me, you do it, right? So I think if we do a 4-hour workshop, everybody will get hands-on and everybody has the computer with them, basic laptop. Then I think they will be able to crack the code and really get into it. हर आदमी अपना वेबसाइट बना लेगा, हर आदमी प्रेजेंटेशन बना लेगा. ये सारा 4 घंटे के अंदर हो जाएगा. I wish I could keep going. I would just, so this is the Suno, okay? This is the Suno song. This is a website, yes? And there is another version of that also. So you can choose the sound and keep playing with it, yeah? Suno.com. Play with it, have fun, enjoy. Sure. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवपाल सर हियर, जिन्होंने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. एंड नाउ इट्स टाइम टू फेलिसिटेट हिम. आई रिक्वेस्ट दर्शन जी चावला सर, our president and the chairman Kishan Milane sir, to please come on stage and felicitate sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एंड जैसे हम सबको पता है, ऑन बिहाफ ऑफ मीरा ठक्कर वास्तु ब्लेसिंग्स की तरफ से हम नज़र क्रिस्टल एंड सिट्रेन क्रिस्टल ट्री दे रहे हैं फॉर एम्पलीफाइज योर वेल्थ, बिजनेस सक्सेस, हेल्थ एंड ओवरऑल अबंडेंस. Thank you so much, sir.
Next, I request Mr. Jayesh Patel from Radio Mirchi to please come on stage. I request both of you to please felicitate him. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Jayesh Patil from Radio Mirchi. Thank you so much, sir, for sharing such insightful and inspiring words with us. Thank you. And now it's time to call the keynote speaker, Dr. Navneet Ji Mandhani. So give a round of applause for Mr. Navneet, sir, everyone. And if I talk about Dr. Navneet Ji's achievements, he achieved Education Icon and Inspirators Award by Lokmat. So give a round of applause. Come on, everyone. And he also achieved Vishesh Gaurav Puraskar, Maheshwari Pragati Mandal Pune. And he brings such amazing skills like guided more than 30,000 people on graphology, signature analyzing, and numerology. And also he created more than 2,000 successful logos of business size of 1 crores to 3,000 crores. So give a round of applause for Dr. Navneet Ji, sir. Thank you so much. Yes, thank you. A very good evening to all of you. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय है मेरा, आप सभी से पर्सनल होता है वो विषय। और आज की डेट में जैसे मैंने मेरा एक शुरुआत में वीडियो दिया था, उसमें बात की थी कि आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा होशियार हो चुका है। वो आपके प्रॉपर्टी के वीडियो कितने देखता है पता नहीं, पर दिन रात वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वीडियो देखता है। और उसमें उसको जो आधा अधूरा ज्ञान मिलता है वो आपको भी बांटने चला जाता है। तो उस समय आपको उसको टैकल कैसे करना है, उसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं डॉक्टर नवनीत मांदनी बाय प्रोफेशन सीए को पढ़ाता हूँ, पर न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी मेरा पैशन है। लगभग 10 से 12 मूवीज़ के पोस्टर और 2000 से ज़्यादा लोगोस जिनका बिजनेस साइज 3000 करोड़ प्लस है, इंडिया अब्रॉड सभी जगह के बनाए हैं। और मेनली जो आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद का भी मीन्स एटलीस्ट आपके कस्टमर का फ़ायदा होगा तब होगा, लेकिन आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो आप खुद का फ़ायदा तो कम से कम कर लो। वैसे मेरे साथ 15 मिनट बात करने का फ़ीस 24,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सबसे 200-300 लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक आध करोड़ हार के जा रहा हूँ। पर डेफिनेटली आपको एक ऐसी चीज़ सिखा के जाऊँगा जो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। सो आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एन्जॉय। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा और बाकी सब डिटेल्स मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में वगैरह होते हैं। आप सभी लोग जो मेनली रियल्टर्स हैं, एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करते हो कि हमारे फ्लैट का नंबर 4 है।
8 है, हमको लेना नहीं है, कहीं तो वीडियो में देखा है 4 नंबर अच्छा नहीं होता है, यूएस में तो 13 नंबर का फ्लोर नहीं बनता है, ये बहुत सारी चीज़ें कस्टमर आपको बोलता है, तो उसका सोल्यूशन मैं देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपको कस्टमर को क्या बताना है, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक न्यूमरोलॉजी लर्न कर लेते हैं, एकदम बेसिक ऐसे समझ के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता उसमें का, एंड देन आई टेल यू कि कोई भी व्यक्ति वेदर इट्स इन द रेंटल प्रॉपर्टी या खुद के प्रॉपर्टी में रहता है तो उसके साथ क्या लैक्यूनाज हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टडीज़। मैंने 33,000 लोगों को गाइड किया है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पढ़ा है और किताबें, इन सब का अनुभव लेकर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो न्यूमरोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करती है डेट ऑफ बर्थ पे। एक एज्यूम करते हैं कि हमारे कस्टमर का नाम है भारत देश, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ऑन पेपर है 15 अगस्त 1947। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको इजीली समझ जाए। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे भारत की 15 तारीख है, इसको मिनिमाइज टू 1 to 9 किया जाता है, जैसे 1 + 5 यहाँ पे किया है, सो दैट बिकम 6। तो ये भारत का मूलांक हो गया, या बर्थ नंबर बोलो, किंग नंबर बोलो, सादी इजी भाषा में इसको मूलांक बोलते हैं। देन भारत के पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल करनी होती है, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर टोटल की 15 अगस्त 1508 1 + 9 + 4 7, इसका टोटल 35 आया, इसको मिनिमाइज किया, ये हो गया 8। तो हम में से हर व्यक्ति टोटल 81 कॉम्बिनेशन में से एक में पैदा हुआ है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 5 वॉट एवर इट इज़। ये सब आपको यहाँ पे अगर आज पता होगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगी, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें किसी को कुछ दिक्कत है समझने में? ईजी है एकदम, ये तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ। अच्छा, अगर मुझे लास्ट में 5 मिनट मिलता है तो मैं आपको मेरे पास एक शास्त्र है जो भारत के सबसे पावरफुल व्यक्ति से लेकर इन बिजनेस, इन पॉलिटिक्स सब लोग यूज़ करते हैं, वो उसका मैं डेमो दूंगा आपको, और आप आपका सेल बढ़ा सकते हो उससे, पर अगर टाइम मिला तो, डिपेंड्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, आप सभी लोग जब भी वास्तु बोलते हो तो 4 दिशा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये हम किसी के भी डेट ऑफ बर्थ को जब हम लिखते हैं उस पे से ये दिशाएं यहाँ पे लिखी जाती है ऐसे। ये आपको दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, इसे लूशो ग्रिड बोलते हैं, राइट। ये बनेगा कैसे, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, एंड देन विल डू इट, एंड आप सभी भी बना के देख सकते हो, पर उसका पर्पस कुछ अलग है। सो आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल ऑफ 15 अगस्त 1947। तो भारत का बीएन था 6 और डीएन था 8। अब मैं आपके सामने, आपको ये खुद भी घर पे जाके बनाना है, ये वीडियो मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वापस एक बार देख लेना। लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, पर आगे वाली जो चीज़ है वो इसी से कनेक्टेड है। सो ये जो लूशो ग्रिड होता है इसका फॉर्मेट फिक्स होता है, लाइक यहाँ पे जो है 4 5 6 2 5 8, इधर है 9, इधर है 1, इधर है 3, इधर है 7। आप इसका कैसे भी टोटल कर लो, इट कम्स टू 15 1 5। अब आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट की और आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके इसमें ये सारे नंबर्स भर देने हैं। अभी का अपना क्लाइंट है भारत देश, राइट। तो उसकी अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को इस नंबर पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला नंबर 1 है, मैंने 1 लिख दिया। दूसरा नंबर 5 है, मैंने 5 लिख दिया। तीसरा नंबर 8 है, मैंने 8 लिख दिया। देन अगेन 1 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर 9 है, 9 लिख दिया। फिर 4 है, मैंने 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे 7 है, 7 लिख दिया। उसके अलावा हमारा BN DN भी लिखना है, मैं अलग इंक से लिखता हूँ। BN 6 है, यहाँ पे लिख दिया। फिर 8 है, यहाँ पे वापस लिख दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, जैसे आप खुद का बनाओगे तो कुछ ना कुछ कॉलम यहाँ पे खाली मिलेंगे आपको, 2 कॉलम 3 कॉलम। अभी यंग जनरेशन में तो 2000 के बाद के जितने मॉडल है बहुत सारे कॉलम खाली मिलेंगे। सो दैट शोज द लैक्यूना। अब इनका मीनिंग क्या है आपको सीखना है, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, आपको बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्लाइंट सामने बैठा है, कुछ तो विषय चाहिए बात करने के लिए, तो आप इस विषय पे भी उससे बात करो, ही विल बी हैप्पी। तो अब मैं भारत देश एक क्लाइंट लेके बात कर रहा हूँ, या आपका ग्रिड आपके सामने है समझो, तो इसका मीनिंग क्या होगा। ये जो ग्रिड है ये डायरेक्शन इंडिकेट्स करते हैं। 4 नंबर इंडिकेट साउथ ईस्ट, 9 नंबर इंडिकेट साउथ, 2 नंबर इंडिकेट करता है साउथ वेस्ट, 7 नंबर इंडिकेट करता है वेस्ट, 6 इज नॉर्थ वेस्ट, देन 1 इज नॉर्थ, एंड नॉर्थ इज 8। कौन सा नंबर बोला नहीं मैंने,
5 नहीं बोला, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो वो ब्रह्मस्थान है। 5 क्या है? ब्रह्मस्थान, जो सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है, सेंटर। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके क्लाइंट के या आपके इसमें जो भी नंबर नहीं है, वो क्वालिटी वहाँ पे मिसिंग होगी, या वो डायरेक्शन उस फ्लैट की या वो जहाँ पे रहता है वो थोड़ा सा लैक्यूना मिलता ही है, 100% मिलेगा। इट इज प्रूवन, इवन इफ द क्लाइंट इज स्टेइंग इन द रेंटेड हाउस और खुद का घर होगा तो ये चीज़ दिखती है। ये ओवरऑल एक मेरे पास 8,000 लोगों का डेटा है, उस बेसिस पे 80% ये मैच होता है। 20% अगर मैच होता तो फिर AI की जरूरत नहीं पड़ती, 80 तक मैच होता है, राइट। तो इसमें अगर किसी के ग्रिड में एक नंबर नहीं है तो देयर कम्युनिकेशन इज वेरी वीक। हमारी जो जनरेशन थी, हम सब लोग 2000 के पहले के मॉडल है, तो अपना कम्युनिकेशन भिड़ जाने का है, क्योंकि 1 नंबर बाय बर्थ है अपने पास। अगर 2 नंबर किसी के पास नहीं है तो ये लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रहेंगे, इंट्यूशन वीक रहेगा, किसी को पैसा दे दिया और पैसा डूब जाता है इनका। देन 3 नंबर नहीं है इस साइड, तो इन लोगों के पास प्लानिंग नाम का प्रकार नहीं रहता है, हर चीज जो है दैट इज अगेन दे डू ऑन द स्पॉट। 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो डिसिप्लिन दूर दूर तक दिखेगी नहीं, अगर 4 नंबर नहीं है तो दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास बहुत बार क्लाइंट आता है कि वो 5 नंबर बोलते हो, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की 750 करोड़ पॉपुलेशन में नंबर 5 मिसिंग है 40% पॉपुलेशन में, 40%। तो आप जब भी देखो, मैंने मेनली मेरे पास एक दिन में 2 से 3 यूएस के जो क्लाइंट होते हैं, हर एक के यूएस में मैक्सिमम हाउसेस घर के बीच में टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। सो दैट इज वाई, बिकॉज उनका सेंटर खराब हुआ है, ब्रह्मस्थान खराब हुआ है। सो मेनी पीपल नॉट हैविंग नंबर 5, तो उस घर में जनरली या तो आप बोलेंगे नहीं यार हमने वास्तु सीखा है, ब्रह्मस्थान तो एकदम खाली दिख रहा है, पर कभी कभी जमीन के अंदर की जियोपैथी एनर्जी जो होती है वो भी वहाँ पे काम करती है, एंड उसके कारण जो है वहाँ पे तकलीफ आती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज 5। देन नंबर 6 पे आ गए, तो अगर किसी के यहाँ पे अगर हमने हस्बैंड वाइफ दोनों का चार्ट बना के देख लिया और नंबर 6 नहीं है, तो उस केस में आप देखोगे कि फैमिली हार्मोनी दिखती नहीं है। देन अगेन नंबर 7 पे बात करूं तो इनके लाइफ में अचानक डिसअपॉइंटमेंट आते हैं अगर 7 नंबर नहीं है तो। इनफैक्ट मेरा एक रिसर्च है, इंडिया से बाहर जितने भी लोग सेटल हुए हैं 100 में से 85 लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 है, और अगर नंबर 7 नहीं है तो बाहर सेटल होने में थोड़ा तकलीफ जाता है। दैट इज अगेन अ रिसर्च पार्ट जो किया है। देन नंबर 8 जो है दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, तो नंबर 8 अगर मिसिंग है तो वो आदमी डिसिप्लिन कम रहेगा। फाइनेंशियल, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसके पास 8 नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो वो पैसे टाइम पे देगा कि नहीं, आप एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि उसका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट रहेगा ही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 9 नंबर जो इंसानियत नाम का प्रकार है, डेयरिंग है, दैट पार्ट इज मिसिंग इन 9। तो अगर किसी का आप घर भी नहीं देखते हो, उसका अगर ग्रिड बनाते हो तो उस घर के अंदर जो मेन ओनर है, जो कर्ता पुरुष है, उसके अंदर जो नंबर मिसिंग होते हैं दैट ऑलवेज शोज समथिंग विच इज लाइक लैकिंग इन दैट हाउस। अब इसको दुरुस्त कैसे करना है उसके लिए वास्तु के अलग अलग एक्सपर्ट है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब क्लाइंट जब आपके पास आता है, जो मुझे दूसरा, ये तो मैंने आपके लिए किया कि आप इसको दुरुस्त कर सकते हो इसमें से हर चीज़ पे। और जनरली हम लोग ये भी बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ का मिक्स करके देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि दोनों का भी चार्ट एक साथ बना लिया तो एक डायरेक्शन आपको वीक मिलेगी, उस डायरेक्शन का आप उपाय कर लो, और कोई वास्तु का उपाय करने की जरूरत नहीं, द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली वर्क। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे समझो मैंने मेरे वाइफ का और मेरा ये ग्रिड बनाया और हमारे दोनों के इसमें समझो 4 नंबर गायब है, सो डेफिनेटली मेरे घर में साउथ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं वहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट भी कुछ कर दूँ तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज। तो इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है जिसमें डेफिनेटली वास्तु करा है, मैं वास्तु वालों के पेट पे लात मारने नहीं आया हूँ, बट मेरा बोलने का ये मतलब है कि एक छोटे से चेंजेस अगर आप लाइफ में जाते हो तो 4 नंबर क्या बताता है, दैट शोज डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है कि मुझे लाइफ में आगे जाना है तो आई मस्ट बी ऑर्गेनाइज, देन ओनली द थिंग्स विल इन माय फेवर। सो दैट इज दिस। पर मैं आपको ये चीज़ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ और एक सिखाने आया हूँ आपको। तो आप में से कितने लोगों की डील फ्लैट नंबर और शॉप नंबर अच्छा नहीं था बोल के कैंसिल हुई, ऐसे कोई है? प्लीज रेज द हैंड। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। इसमें जनरली कौन सा फ्लैट नंबर लेता नहीं है कस्टमर? बोलो कौन कौन से नहीं लेते हैं? 8 नहीं लेता है, 13 बोल दो, 4 नहीं, 4 की फैमिली नहीं लेते हैं। 4, 13, 22 और 31 जनरली थोड़ा हिचकिचाहट होती है क्योंकि उसकी लाइफ की कमाई और कहीं तो सुना होता है राहु। आपको मैं बोल दूं, मैं जब जब 4 नंबर पे रील बनाता हूँ, रील 5 मिलियन 3 मिलियन पे जाती है, क्योंकि दुनिया की 60% पॉपुलेशन में या तो मूलांक 4 है या तो भाग्यांक 8 है, इसलिए कलयुग में सब भोग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रील जो है वो 4 की वायरल होती है।
तो 4 नंबर का फ्लैट सही में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप सब घर के लोग हैं तो मैं बोलता हूँ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और 8 ले सकते हो क्या? ले सकते हो, पर दोनों को आप दुरुस्त कर सकते हो बिना फ्लैट चेंज किए। देयर इज नो नीड टू चेंज द फ्लैट। अगर कस्टमर को फ्लैट अच्छा लग गया है और आपको लगता है कि वो आपका भी फ्लैट है और आपको कंटिन्यू करना है, और मैंने ये करके देखा है, बोल दो खुद होके लेके देखा है फ्लैट कि कुछ बिगड़ रहा है क्या अपना, एंड देन फिर उसको एक नंबर में चेंज किया, देन इट वर्क्स वेरी वेल। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। समझो मुझे एक फ्लैट मिल रहा है जिसका नंबर है 1300। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैट, नंबर ऑफ द फ्लैट? 1300। इसका टोटल क्या हो गया? 4 हो गया, राइट। क्लाइंट को बहुत पसंद आ गया, लेकिन अभी उसको कह के लेना नहीं है, सब चीज है। तो आपको क्या करना है? उसको बोलना है कि भैया एक मस्त अच्छा सा आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का, मेनली ग्रीन कलर का डोर का प्लेट बना लो आप, और उसमें क्या करना है, 1300 के आगे आपने ए लिख देना है, जस्ट ए लिख देना है ग्रीन कलर से। सो द वैल्यू ऑफ ए इन न्यूमरोलॉजी इज 1। सो व्हाट इज द टोटल नाउ? 5। 5 इज द वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अच्छा, वो उससे भी और बेस्ट करना है, वो अगर उसका अगेन इसमें थोड़ा सा मेरा प्रोफेशनल हाइडिंग रहेगा, आप बी लिख दिया तो देन दैट बी का वैल्यू 2 होता है। सो व्हाट इज द फ्लैट नंबर बिकम देन? 6। 15 हो जाएगा यानी 6। तो ये सॉल्यूशन आप क्लाइंट को दो, अभी भी एग्जिस्टिंग फ्लैट में है, देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, आपका फ्लैट भी बिकेगा और वो लेगा भी, और बाद में कुछ अच्छा लगा तो मुझे भी दे देना, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज के लिए आया हूं, शायद 1 आध मिनट ज्यादा लग जाए उसके लिए। अब इमेजिन करिए आप सब लोग अपने ऑफिसेस में बैठे हैं, यहाँ पे बिल्डर्स है, प्रमोटर्स, रियल्टर्स, सब लोग हैं, और आपको डिसाइड करना है कि आप आपके ऑफिस के किस जगह में बैठोगे तो आपका बिजनेस दौड़ पड़ेगा, और कौन सी जगह। आदमी को क्या चाहिए होता है? सबसे पहला पैसा, सेकंड चाहिए होता है नाम, और तीसरा होता है लीगेसी। ये तीनों किस जगह पे बैठ के मिलेगी, इसका थरो रिसर्च ज़्यादा मलेशिया में हुआ था, और उस विद्या के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ। पर आपको समझने में अगर लेट हो गया, क्योंकि वो 5 मुझे यहाँ पे घड़ी दिखाई दे रही है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझे। तो अभी आपके पास 2 चॉइस है, आपको आपकी बेस्ट जगह ढूंढनी है तो वो समझा दूंगा मैं, और नहीं तो प्रोडक्ट सेल करने की जो टेक्निक है, जो हमारी पुरानी विद्या होती है, वो सिखाना है। आप मुझे बोल दो, या दोनों सिखाना है तो ऑर्गेनाइजर को 5 मिनट ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, कंटिन्यू, ओके। चलिए, तो अभी है ना, इधर देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1980। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, बाद में वीडियो देख लेना, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, बट अभी खाली ध्यान देना है इसमें। तो एक मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1980। इन प्लेसेस को हम अलग अलग नाम देते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज, इसको मैं बोलूँगा ए, दिस इज बी, सी, डी, E, F, then it's G, then H, I, J, K, L, M, जो भी इनको नाम दे दिए मैंने। अभी होता क्या है, आपको आपके डेट ऑफ बर्थ का एक ऐसा ग्रिड बनाना होता है। मैंने बनाया कैसे वो बता रहा हूँ आपको। 5 and 2, 5 के जगह 0 + 5, 5 लिख दिया। B का प्लेस है 2, 19 का टोटल 1 + 9 is 10, 1, एंड 80 का टोटल 8 + 0 is 8। फिर वापस उसको मिनिमाइज किया, 5 and 2 7, 1 and 8, वहाँ पे गलती कर दी ऑफिस के स्टाफ ने, इट इज 9। 1 and 8 कितना हो गया? 9। और 9 and 7 कितना हो गया? 16। 16 बिकम 7। ये एक ऐसा ग्रिड बनता है, इसका एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप बाद में मीन्स मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ये बनने के बाद उसको इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। यानी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं खाली, मेरे नॉर्थ वेस्ट साइड का वैल्यू है A + B + E। थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत मजा आएगा। तो मेरी A की वैल्यू क्या थी 2 मिनट के लिए? 5। फिर B का वैल्यू क्या था? 2। और E का वैल्यू क्या था? मैंने जस्ट यहाँ पे दिया 7। 5 और 2 7, 7 और 7 कितने हो गए? 14, दैट बिकम 5, राइट। अब मेरे नॉर्थ की वैल्यू मुझे लेना है। नॉर्थ की वैल्यू इज B and C। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस इज 2 and 1 C। ऐसे हर डायरेक्शन का एक वैल्यू निकलता है, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। आपको किस डायरेक्शन में बैठना है? जहां की वैल्यू 6, 7 या 9 है। जहां की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से? 6 या 7 या 9। 6 विल गिव मनी, 7 जो है दैट इज मनी प्लस लक, एंड 9 इज एवरीथिंग। सो ये तीनों में से कोई भी वैल्यू जहां पे आती है, वहां पे अगर आप बैठते हो तो डेफिनेटली योर बिजनेस विल वर्क वेरी वेल। और ये प्रूवन है,
इंडिया के काफ़ी फेमस ये है वास्तु तज्ञ जो एक वास्तु का मिनिमम ही स्टार्ट विथ 11 लाख और 1 करोड़ 11 लाख वगैरह चार्ज करते हैं। उनके साथ बैठ के मैंने उन्होंने जितने वास्तु किए आज तक उनको सारे के एग्जाम्पल उनको ओनर के देखे एंड दिस इज 100% प्रूवन। अब मैं आपको थोड़ा इसका आगे का पार्ट थोड़ा झलक दे देता हूँ एंड देन वी स्टार्ट। सपोज आप में से कोई व्यक्ति है, मुझे तो कुछ भी करके 6, 7, 9 लाना है, पर मेरे कोई क्लाइंट आए, समझो रमेश जी आए और रमेश जी बोले कि सर अपने को तो नॉर्थ वेस्ट में ही बैठना है पर वहाँ का वैल्यू 5 है और वहाँ से मुझे सेल चाहिए। तो अब मुझे बताओ, मुझे मेरा एक्सपेक्टेड नंबर क्या है? 5 है क्या? कितना है? पहला सबसे पहले तो 6 है। 6, 7, 9 कुछ भी चलेगा। रमेश जी बोलेगा अपने को सिर्फ पैसा चाहिए। तो अभी 5 के लिए कितना कम गिर रहा है? 1। अब न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर होता है लीडरशिप का। तो मैं रमेश जी को बोलूंगा बिंदास हर चीज में घुस जाओ, खुद को बॉस समझ के करो काम, तुमको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब समझो दूसरे अपने आगे श्रीपाल भाई और बोले नवनीत अपने को तो है ना नॉर्थ में ही बैठने का है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पे नंबर क्या दिख रहा है? 3। अब श्रीपाल बोल रहा है अपने को पैसा भी चाहिए, रेपुटेशन भी चाहिए। श्रीपाल भाई की रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 7। तो यहाँ पे तो 3 पड़ा है। अभी 3 को कितना कम गिर रहा है? मैं बोला श्रीपाल भाई टाइम रहते डिसिप्लिन ला लो लाइफ में, 7 नंबर की मिलेगी या नहीं मिलेगी चीज। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे पूरे 9 एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आया ना? यस। अब मुंबई के 3-4 जो अच्छे बड़े ब्रोकर्स है उनमें से एक मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट है जिनका करोड़ों में पूरा कमीशन मिलता है। तो उनको जो मैंने 3 साल पहले एक चीज़ सिखाई थी, हाउ टू सेल द फ्लैट, वो मैं अभी करके बता रहा हूँ और आप सब लोग यूज़ करिए उसको। कोई मंत्र तंत्र न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे से कुछ लोग जानते भी होंगे, हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे वाले लोग भाषण करते वक्त उस विद्या का यूज़ करते हैं, जब मीटिंग करते हैं उस विद्या का यूज़ करते हैं। आप लोग सेल करते हुए करना, आपका काम 500% होगा या नहीं होगा, पर उसका मैं लाइव डेमो करके बता रहा हूँ। ऑल ऑफ यू रेडी? लास्ट 5 मिनट। रमेश जी यस, चलो माइक लगेगा या यहीं से बताऊं या माइक मुझे करके बताना पड़ेगा? ओके, मेरा आवाज आ रहा है सभी को? ये भी चल जाए। सबसे पहला चीज आपका क्लाइंट आपको सबसे पहले कांटेक्ट, अच्छा पहले बेसिक सिखा देता हूं। हमारे को भगवान ने 2 नॉस्ट्रिल के 2 छेद दिए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अभी आप चेक करके देखिए आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है। जैसे ऐसे रखना है एंड जस्ट सांस छोड़ के देखिए। 1 नॉस्ट्रिल गिव द मोर एयर प्रेशर, आइदर राइट और लेफ्ट। खाना खा के बैठे हो तो लेफ्ट ज्यादा चल रहा होगा लोगों का, देख लो कौन सा चल रहा है, लेफ्ट या राइट? कोई तो एक चल रहा है, दोनों बंद होना बहुत खराब है, एक चल रहा है, राइट? तो कोई भी नॉस्ट्रिल चलता है तो सबसे पहले अभी आपके कस्टमर का आपको कॉल आया, मोबाइल आपके हाथ में है या आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, ये प्रूवन है, आप कहीं पे भी मैं चैलेंज करने को भी तैयार हूं। तो आपका कस्टमर का कॉल आया, आपने 1 सेकंड पहले चेक कर लिया राइट नॉस्ट्रिल इज वर्किंग और लेफ्ट वर्किंग। सपोज लेफ्ट इज वर्किंग, आपने इमीडिएटली लेफ्ट हैंड से फोन उठाना है और लेफ्ट की तरफ मुड़कर उससे बात करना है। चांसेस ऑफ कन्वर्जन इज वेरी हाई। उसमें भी अगर कस्टमर लेडीज है तो 500% डन, राइट? क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज फॉर मून, मून बिलोंग्स टू लेडीज, फीमेल। अब अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, सेम थिंग, टेक द फोन फ्रॉम राइट हैंड, आपका गर्दन राइट के तरफ कर लो और उनको बात करो। द चांसेस, और हर डील, मैं प्रॉपर्टी की नहीं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहे हो आप या और कोई प्रपोज कर रहे हो किसी को, हर केस में काम करेगा ये, ठीक है? अब इसमें सिर्फ एक ही रिस्क है, दोनों नॉस्ट्रिल भी दिन में से 16 बार 15 सेकंड के लिए चलती है। उस समय कर लिया तो बेड़ा गर्क, बोल दो वो चांस नहीं लेने का, राइट? अब कस्टमर आपके पास आया, आपकी मीटिंग है, आपने सब चीज बता दी, अब उसको प्रोस्पेक्ट्स बता, आप आपके बिजनेस का प्रोस्पेक्टस बता रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी नोस्ट्रिल, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने मेरी नोस्ट्रिल चेक कर ली, अभी राइट नोस्ट्रिल चल रही है, राइट? ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ समझो। अब कस्टमर जो आया है वो इधर खड़ा है, कस्टमर मेरे राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में? लेफ्ट हैंड में। अच्छा वो अपोजिट है इसलिए समझेगा नहीं, मैं बोल देता हूँ लेफ्ट हैंड में, राइट? पर मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल काम कर रही है? राइट। तो मैं क्या करूंगा, होशियारी से बात करते करते इधर हो जाऊंगा। सो कस्टमर इज एट माय राइट, और आप उसी हैंड से उसको ब्राउशर देना
उसी हैंड से आप उसको शेक हैंड करना, आपका विजिटिंग कार्ड देखना, रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कस्टमर आएगा ही वापस, वो फ्लैट लेने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, वो प्रॉपर्टी लेने के। इवन आप गवर्नमेंट ऑफिसर से मीटिंग के लिए जा रहे हो, ये साइन नहीं कर रहा है बहुत दिन से, आप जाके उसके आपके नाड़ी के हिसाब से बैठ जाओ, दैट वर्क्स। इवन व्हेन यू लेफ्ट योर होम, अभी जो इतने ये हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, उस टाइम पे भी आप अगर नॉस्टिल चेक करके घर से निकलते हो एंड सेम लेग यू पुट इन योर कार, एंड किसी के ऑफिस में जाते हो भी वही पाँव रखते हो जो नॉस्टिल चल रहा है, आधा पौन घंटा बार बार ऐसे मत करो, कोई अलग समझने लगेगा। आधे पौन घंटे तक सेम ही चलता है, राइट? और बाद में आदत हो जाएगी आपको कि बाबा कौन सा चल रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई एंड ऑटोमेटिकली योर डील क्लोज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो क्लाइंट है, अभी ये मेरा थोड़ा विषय उसी से कनेक्टेड है, आपका क्लाइंट आते समय ही आप पहचान सकते हो कि ये सिर्फ पूछ के जाएगा या लेने वाला है, उसकी भी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। और वो कैसे है खाली 1 मिनट में बताता हूँ, देन दैट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। और एक छोटी सी टिप भी दे दूंगा आप सभी को। अब समझो आप आपके ऑफिस में बैठे हो, कस्टमर अभी एंटर करने वाला है, आपको बाहर रिसेप्शनिस्ट से फोन आ गया कि सर वो क्लाइंट आ गया, अभी मिलने आ रहा है। आपने आपकी नॉस्टिल चेक कर ली क्लाइंट आने के पहले, समझो राइट वर्क कर रही है। आपने देखने का कि आपका कस्टमर कौन सा पाँव अंदर रख रहा है उसका, अगर उसने राइट रखा और राइट में आके बैठ गया तो 500% काम होना है, और वो लेफ्ट अंदर रख रहा है और आपकी राइट चल रही है तो वांदे है, बोल तो काम होने में टाइम लगेगा, देन यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ भगवान ने हमको जो ये 2 नोस्ट्रिल्स दी है उससे पता चलती है। यू कैन जज एनीथिंग, मैंने तो बहुत आपको उसका 2% बताया है। एंड लास्ट चीज, जब भी आपका जो विजिटिंग कार्ड वगैरह होता है, आजकल तो सारे डिजिटल कार्ड्स हो चुके हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो विजिटिंग कार्ड के केस में आप आपके ऑफिस में या घर में एक जस्ट अच्छा सा ये ले लो, कांच का छोटा सा बाउल ले लेना, उसमें शहद डाल देना अच्छा वाला, और उसमें हमेशा आपका विजिटिंग कार्ड डुबा के रखना है। हो सके मुंगिया मीन्स बाकी कुछ उसको ना लगे उसके लिए कुछ प्रिकॉशन ले लो। दिस वी आर सेइंग टू यूनिवर्स कि हमारे क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन इस शहद के उतना मीठा रहे, यानी रेफरल वो ज़्यादा से ज़्यादा भेजे। दिस इज़ वेरी सिंपल रेमेडी, एनीबडी कैन डू इट, वर्क्स वेरी वेल। और ये सब बातें यूट्यूब पे ऐसे ही 3.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, इंस्टा पे मिलियंस में लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? द रीज़न बिंग एवरीथिंग इज प्रूवन। हर चीज़ का अभ्यास करके मैं आपको बता रहा हूँ। और जाते जाते एक ट्रिक दे देता हूँ एंड देन दैट इज़ ओवर फ्रॉम माई साइड। आपके स्टाफ का मोबाइल नंबर, जनरली रियल स्टेट में कस्टमर तभी आएगा जब आपको कॉल बहुत सारे आएंगे। आप बहुत बार देखते हो कि स्कीम, हाँ स्कीम का नाम और वगैरह उसका कभी अलग सेशन रखेंगे हम लोग। बहुत सारे स्कीम बहुत अच्छी होती है पर नाम गलत हो जाता है, वो स्कीम रुक जाती है, उसके करने का भी एक प्रोसेस है, पर अलग से कभी देखेंगे। पर अभी आपको खाली एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि आपके सेल्स वाले जो नंबर होते हैं, जो भी आप होर्डिंग पे लगाते हो, कस्टमर को देते हो, अगर उसका लास्ट नंबर आप 5 रखते हो, नंबर 5, then you will get maximum call from the customer and that converts very well। और रियल स्टेट में और एक नंबर काम करता है, नंबर 6, उसमें भी बहुत कॉल आएगा लेकिन हर कस्टमर निगोशिएशन करेगा, रियल स्टेट में करता ही है। तो ये 2 नंबर अगर लास्ट डिजिट रखते हो मोबाइल का, दैट ऑल्सो गिवन ट्रिमेंडस रिजल्ट। उसका भी मेरे पास 18,000 लोगों का डेटाबेस है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच नवनीत सर, काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन सर ने शेयर की है जो आप सभी को काफ़ी यूज़ पे आने वाली है। तो नवनीत सर के लिए एक बार सभी को तालियां बजानी है। थैंक यू सो मच। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल सेशन, द पैनल डिस्कशन। The topic of the panel discussion is changing trends in real estate deals. And I would like to call first of all the moderator, Mr. Abhijit Sabrawal. A huge round of applause. He's the moderator and representing the channel partners. So now I'd like to call all the participants. First of all, Mr. Akash Agarwal, MD, Chrysler Group. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। Mr. Tarush Atul Goel, Director, Goel Ganga Group. Mr. Prasanth Gopinath, Director, Commercial, Kohinoor Group. Divya Pradhan, Branding Head, Rohit Group.
So we'll be starting with the panel discussion now. Hello to all. Speak. उधर के. Hello to all the channel partners. Actually, today the Prop Day 2025, we are heading towards the last session, that is the panel discussion, adapting the changing trend of real estate. So we'll start it soon. Hello to all the panelists. Hi, sir. My first question to Akash sir. Akash sir, आज क्रिसाला ग्रुप में जो भी ट्रेंड आ रहे हैं नए, आप तो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, पर जो भी नए ट्रेंड आज के डेट में आ रहे हैं और जो भी लास्ट फ्यूचर में अगर आप देखेंगे 2 साल से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे अडॉप्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आज आप. First of all, happy afternoon everybody. Thank you for calling me here. यहाँ पे बुलाने का आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठा हूँ और ये पैनल डिस्कशन का मुझे मौका दिया गया. सो अभिजीत सर के क्वेश्चन पे व्हाट आई फील दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. आई थिंक इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट. व्हाट आई बिलीव, अगर आप चेंज नहीं होंगे मार्केट के साथ तो मार्केट आपको चेंज कर देगा. ये क्रिसाला हमेशा यही सोचता है कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, उस हिसाब से हमने अपने आप को मूव करना चाहिए. बिकॉज सी सो हियर अगर मैं देखूं तो सारे बिजनेसमैन बैठे हुए मैक्सिमम. बिजनेस इज ऑल अबाउट अदर्स, इट इज नॉट अबाउट यू. आपकी तरफ से लोगों को क्या चाहिए ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसे मार्केट का ट्रेंड आप अगर बोलोगे तो ये इतनी रोज अलग अलग तरीके से बदल रहा है कि ये सब अब हम सब जानते हैं. अगर आप 2016, 2015, 2014 की बात करेंगे तो उस समय जो बायर्स था, जो बायर पर्सोना था, आज का बायर और आज का पर्सोना ये बहुत डिफरेंट है. जब उस समय जो हम साइजेस बनाते थे, जो प्राइजेस थी, वो आज पूरी चेंज हो चुकी है. बट वही बिल्डर आगे है या वही बिल्डर माल बेच पा रहा है या सस्टेन कर पा रहा है जो ये मार्केट ट्रेंड के साथ चल रहा है. सबसे बड़ा चेंज अगर आप लोग बोलेंगे तो वो आप है, चैनल पार्टनर्स. आज चैनल पार्टनर को जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, जिस बिल्डर ने, जिस फ्रेटर्निटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए. बिकॉज इट्स अ ट्रेंड. आप उसको नहीं बोल सकते कि नहीं हम लेगेसी बिल्डर है, हम पुराने बिल्डर है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये फॉलो नहीं कर सकते, हमें कोई चैनल पार्टनर हमारे साथ नहीं चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. ट्रेंड बोलता है कि नहीं, आज आपका हर मूवमेंट, हर प्रोजेक्ट, हर चीज़ बायर के साथ साथ आपको चैनल पार्टनर के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा, तो आपको बनाना है. सही सर, इसमें आप कोई दो राह नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. सो इन क्रिसाला ऑल्सो आप टेक्नोलॉजी से लेके अगर आप, हमने ये देखा है कि कस्टमर जो है, पहले जो बायर हुआ करता था और आज का जो बायर है, ये प्रोडक्ट से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रहा है. तो हमने एक्सपीरियंसेस सुधारे हमारे प्रोजेक्ट्स में. वो प्रोडक्ट से ज़्यादा ब्रांड ले रहा है. तो जैसे हमने शुरू किया, हम हर रोज़ आज भी हम यही सोचते हैं कि ब्रांड को और कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कौन सी चीज़ है जो कस्टमर एक्सपीरियंस से लेके, प्रोडक्ट से लेके, ब्रोशर से लेके, कस्टमर पोजीशन तक. आप देखते होंगे पोजीशन के भी इवेंट्स शुरू हो चुके हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको देनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपका बायर आपसे लेगा, वरना आप मार्केट में पीछे रह जाओगे. सही है सर. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू तरुण सर. सर आज के टाइम में डील जल्दी क्लोज होने के लिए आपके ग्रुप में कौन सी नई स्ट्रेटजीज या कुछ प्लान्स ऐसा कुछ है आपके जो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहेंगे? First of all, thank you for having me. It's a great honor to be here. आप लोगों को सबको congratulations for the 7th year and happy prop day. So ऐसे कोई specific strategy तो नहीं है, like Akash sir said, कि we also try to understand the market and as per the market dynamics
try to see what are the challenges clients are facing in closing the deal. अगर मुझे कोई recent example use करना रहेगा, so अभी recently जो मार्च के बाद थोड़ा सा मंदी देखा है हमने related to people's money getting stuck in the market, Trump's tariffs, उसके वजह से थोड़ा सा clients में I think wait and watch strategy आ गया है. They want to wait. It's not like कि site visit नहीं हो रहा है, but they want to wait. ऐसे टाइम पे we have just tried to learn from the market, learn from leaders like Crisella and Kohinoor, and try to see how we can ease it out for them. So I think in these kind of scenarios, what helped us is introducing schemes, banking schemes where because they are already worried about their downsizing, they're paying rent, तो उनको वो हेजिटेशन रहता है कि इतने ही अनसर्टनिटी में मैं कैसे अभी कमिट करूँ एक फ्लैट लेने को. तो हमने थोड़ा कोशिश की है कि इंट्रोड्यूस स्कीम्स सच एज 8999 ओन योर फ्लैट, 1% डाउन पेमेंट, नो EMI फॉर 24 months. वैसे बोलने को इट्स नॉट इतना उनको रियलाइजेशन में फ़र्क नहीं आता है, बट एटलीस्ट इनिशियली द हर्डल ऑफ कमिटिंग टू दिस फर्स्ट ईयर ऑफ मेकिंग दीज EMI पेमेंट्स, वो अगर ईज कर दिया तो मे बी आई थिंक इट हेल्प्ड अस विथ सम डील क्लोजर इन दिस सिनेरियो. एंड सेकेंडली आई थिंक इन एनी मार्केट सिनेरियो जब भी कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम आती है, आई थिंक डील क्लोजर में द बिगेस्ट आई थिंक people we rely on is everyone like you, all the CPs, because I think they are able to bridge that gap, and they become like an extended sales arm where they're able to dedicate their team and bring clients on site even when site visits are not happening. And especially in East and West, we've seen that it's dominated by channel partners, and it's for a good reason. Because they're able to convince the client in such times, and they're able to not let a inquiry go. So in these times, we have also tried to incentivize our channel partners a little bit more, so that they are motivated to bring site visits and also push for deal closures. उसके अलावा I don't think there's anything very groundbreaking that we're trying to do. We're just trying to learn from the market leaders and see what's working and उसको implement करने की कोशिश. Great sir, great. My next question to Prashant sir. Sir, अभी कोहिनूर में आपके पास तो बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट आते हैं कमर्शियल में, तो मेनली सर कमर्शियल में जो क्लाइंट आता है उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, उसका बैक ऑफ द माइंड क्या होता है? वो जब एक आपके लेवल के ब्रांड को अप्रोच करता है, वैल्यू तो ऑब्वियसली हाई टिकट साइज होती है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है और एक्सपेक्टेशन को आप पूरा कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस इवेंट. मैं अभी चेक कर रहा हूँ लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल, अभी वो राइट में है, मेरा लेफ्ट काम कर रहा है, तो आई डोंट नो, सो आई एम जस्ट होल्डिंग दिस वे मे बी, बट जस्ट टू टेक इट अपार्ट. So okay, so just to bring a perspective, I was just thinking, okay, last 5 years, if Pune has sold about 3 lakh apartment, and if I think that, okay, you all have sold 50% of it, 1.5 lakh apartment sellers are here, right? That's amazing to see such a turnout and such a crowd. Yeah, now coming back to the question, see, right now, in commercial real estate, it has evolved much better than ever. What we feel is today sustainability is a core aspect in any deal. That see, normally people make a mistake of who we are selling it to, and then cater to their requirement. Most of it turns out to be an investor, and an investor wants a return on investment. And if the return on investment has to come, there has to be a client. Now, if there is a client, they are servicing to another client. So somebody sitting in US or Europe is looking at sustainability as a basic minimum criteria. If you're not talking that language, you are not in the room anymore with them. So sustainability has become a critical factor, and now flexibility post-COVID, right? So if you look at the change in real estate trends, post-liberalization, post-service tax to GST to RERA, COVID is one big change which has happened. Because of COVID, now a lot of people are working from home. Now you'll have to get them from the couch to the office. So which means you'll have to give that kind of a working environment where people will love to come back to office.
where it is flexible, sustainable. There are nooks and corners where they have breakouts. They have, and in fact, KWT. If you, I would welcome everyone to visit the Pimpri. When we look at the lunch time, the number of people just walking around and then enjoying that breakout is amazing to see. And those are multinational, big reputed multinational companies, employees who are doing this. So, for them, these kind of things have become very, very important. And then also further, we'll have to categorize whether it is a manufacturing client, an IT client, or a BFSI client. Each client has their own kind of requirement. But basic norm has been sustainability. If you have to provide a very wellness-oriented building, which is, which is not just, quality is not anymore in brick and mortar. It is also in the air that comes in. It is also in what they are seeing, the light that comes in. Each design element is very, very important. So hence, consider the design aspect to be very, very important when you have to look at how the trend is evolving and changing. I hope I have given. Great, sir. Yeah, thank you. My next question to Divya ma'am. Ma'am, you are into branding. और आज के दिन में किसी भी डेवलपर को एक ब्रांड क्रिएट करना और ब्रांड को डिफरेंशिएट दिखाना कितना इम्पोर्टेंट है? Thank you, Mr. Abhijit. Hi, everyone. I'm, of course, Divya Pradhan. I have more than 16 years of experience in real estate industry, both in Pune, Mumbai, so I've seen it all. Thank you for being such a warm audience, and thank you for inviting us here for this panel discussion. So differentiation जब हम बोलते हैं, differentiation का मतलब होता है uniqueness. हम अलग कैसे हैं, हम अलग कैसे बन सकते हैं, right? So अलग बनना क्यों important है? Because I personally feel अलग बनने से हमको 3 चीजें मिलती हैं. One being we attract clients, and that's our major goal. Second is how to stand out from the crowd. Standing out is so important. If you don't stand out, you will not be visible. एक basic example देती हूँ. When you're traveling anywhere in Pune, you will see 90% of the outdoor hoardings, real estate. The client is confused. How do you stand out? Usme bhi, it's either elevations, it's either amenities, or a celeb face these days. So, I want to just give you an example of Rohit Group, how we try to differentiate. There are various categories in differentiation. One is niche specialization. अब niche क्या होता है? It's a special category. हम लोग अगर सब कुछ focus करेंगे, सब कुछ करना चाहेंगे, we will not be able to cater to everything, right? So some people only focus on super luxury apartments. Some people can focus only on horizontal. Some people focus on communities, selling only to Sindhis, Gujaratis, businessmen. So that's one thing how you can differentiate yourself. Second is brand language, right? The tone, the aesthetic appeal. आप क्या colors use कर रहे हैं? आपका tone क्या है? Are you talking about value-driven messaging? Are you talking about community development? या basic हम जो amenities हैं, 30+ lifestyle amenities or 100+ customers and bookings done. So that's something which is very important, right? And I would also like to highlight is usage of technology. Today, I think one of the slides I read that 70% people today, out of the whole population in India, are present in one of the platforms, Meta, which is Facebook, Instagram, LinkedIn, or Twitter. So today, everybody has to focus on digital integration. आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको definitely एक ना एक eyeball मिलेगा, right? And apart from that, I would like to highlight few parameters here. That is, today you would be surprised, maybe many of you know that 98% of people open WhatsApp messages versus traditional 15 to 20% open rates in email and SMS marketing, right? Above that, we have 50% qualification ratio in WhatsApp marketing because real-time communication happens there. So that's one of the things I think we all should focus on, technology integration. That's another thing. Quickly, I summarize. So the process of differentiation happens जब client को आप different लगते हैं, client attract होता है आपके साथ. He'll come to you or with you to the site you want to go to.
the reliance on price decreases a lot, right? When I know, for instance, a Louis Vuitton bag can be a 2 lakh rupees, I will not go there and negotiate. I'm not giving a real estate example, but I'm just saying the reliance on price decreases. When the reliance on price decreases, the only effort we have to take is make good relationships or create extremely beautiful experiences like, Mr. Akash said. Experience at the center, experience how you communicate, how you build rapport, how you build relationships is very important. वो होने के बाद automatically brand image strong होती है and marketing campaigns are more effective. So I think differentiation is very important today. It's important to be unique. Thank you. Great, ma'am. Akash sir, in क्रिसाला डेटा एनालिसिस और आज एआई ये सब चीज़ें आने के बाद से क्रिसाला ने इसको कैसा अडॉप्ट किया है और इसमें कुछ आप एक एक्सपीरियंस अगर शेयर कर पाए कि आपको ये सब चीज़ों के वजह से पिछले कुछ सालों में कुछ बेनिफिट हुआ है और क्या बेनिफिट हुआ है एक्चुअली? ग्रेट क्वेश्चन फॉर एवरीबडी. आई थिंक जैसे मैंने शुरुआत ही की थी पहले कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, वैसे डिजिटल इज़ वन ऑफ द चेंज एंड डिजिटल इज़ फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ डिजिटल. मतलब जैसे प्रशांत ने बोला 2019 के बाद, कोविड के बाद से तो सारी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है. जो बायर पर्सोना से लेके लोकेशन से लेके उसके लेने के तरीके से लेके सब कुछ चेंज हो चुका है. सो ये जो डिजिटल क्रांति आई हुई है, आज हम ये जो एक्सपांड हो रहा है रियल इस्टेट ओवर द वर्ल्ड, दुबई, एवरीबडी नोज दैट हाउ इट इज़ गोइंग. बैंगलोर, पूना, कॉन्जिक्यूटिवली दिस इज़ आवर 3rd ईयर जहाँ पे पूना टॉपिंग द चार्ट. 90,000 से ज़्यादा यूनिट हम हर साल बेच रहे हैं इन पुणे. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल. ऑल दी चैनल पार्टनर्स, जैसे आप लोगों के पास तो डिजिटल छोड़ के कोई सोर्स ही नहीं है. बट देर इज़ अ कैच. आपने जैसे बोला, देर आर लॉट मेनी टूल्स. जैसे आप लोग भी देखते होंगे, क्रिसाला आज बड़ा हुआ है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डेटा एनालिटिक्स. क्रिसाला इज़ अ वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा लैक करता था. इसीलिए सालों से रियल इस्टेट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला गया है. बट हमने ये जाना कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई रियल इस्टेट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इसको एक एमएसएमई या इंडस्ट्रियल सेक्टर का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिकॉज इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. तो इसके लिए हमने जो पॉसिबल टूल्स थे, आई एम अर्जिंग एवरीबडी हियर, जितना हो सकता है उतना आपके बिजनेसेस में ईआरपी यूटिलाइजेशन शुरू कीजिए. ईआरपी आप आज नहीं, आज उसको आप एक्सपेंसेस मत सोचिए, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. अगर उसको एक्सपेंसेस जैसा लेंगे आप, तो आप कभी ईआरपी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि नहीं ये आज मेरा इतना खर्चा होने वाला है. बट उसके बाद जो आपका सेक्टर, आपका सेल्स ऑर्गेनाइज होगा, you won't believe, wonders will happen. In Crisala, we are proud that हम सबसे पीछे आके आज 95% of our whole business is on ERP. हर चीज़ हमारी ERP पे है, हर चीज़ हमारी टेक्नोलॉजी पे है. हम पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI का इतना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इन क्रिसाला कि वहाँ पर हम कस्टमर के बायर से, जैसे दिव्या ने बताया, कस्टमर के बायर के बिहेवियरल से लेके उसका वो कौन से लोकेशन पे है, एज ग्रुप कौन सा है जिसको हमने टारगेट करना चाहिए, कौन सा यूनिट साइज है जो हमारा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा लोकेशन है जहाँ क्रिसाला सबसे ज़्यादा फेमस हो चुका है और किसको टारगेट करना चाहिए, ये हमने जाना. हमारे पास डैशबोर्ड्स है, हमने सारे डैशबोर्ड्स क्रिएट किए हुए क्रिसाला में. जितना हम ₹1 भी अगर क्रिसाला में स्पेंड हो रहा है ऑन डिजिटल, एज वी आर अ चैनल पार्टनर ड्रिवन कंपनी, तो हम डिजिटल पे बहुत स्पेंड नहीं करते. बट चैनल पार्टनर भी अगर हमारे लिए कोई बुकिंग ला रहा है तो वो कौन से एरिया से आ रहा है, वो क्या एरिया, तो हमारी टीम ने चैनल पार्टनर्स जो हमारे साथ क्रिसाला में काम करते हैं, दे नो दैट, हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया कि आपका पैसा वेस्ट मत कीजिए, ये वाले सेक्टर और ये वाले एज ग्रुप को अगर आप टारगेट करेंगे तो मेरा ये प्रोडक्ट बिकने वाला है. साइजेस भी, जैसे कि मैंने अभी ताथौड़े में एक लॉन्च किया जस्ट, वहाँ पे साइजेस बहुत सारे चैनल पार्टनर्स आए जो रैंडमली आके
मुझे बोले कि ये साइज बड़ा है, प्लीज़ ये मत लॉन्च कीजिए, यहाँ पे आपका कॉस्ट 90 लाख से अबाव चला गया तो आपका यूनिट नहीं बिकेगा. बट वी वोंट बिलीव इन टॉकिंग. हमारा एनालिटिक्स ये बोल रहा था कि ऐसे लोग है मार्केट में जो ये प्रोडक्ट लेने वाले हैं, एंड विद इन अ मंथ हम 90 लाख के ऊपर का 2 BHK वहाँ पे बेच पा रहे हैं और 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का 3 BHK बेच पा रहे हैं, जो 100 इन्वेंट्री हमने देखते देखते बेच दी. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डाटा एनालिटिक्स. ऐसा जैसे पहले बहुत ट्रेडिशनल सेल हुआ करता था. मेरी टीम आती थी, मुझे बोलती थी सर कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, आपने यही करना चाहिए. सर ये साइज इधर चलते, आपने यही करना चाहिए. सर हमने रैंडम बोला जाता था, कालेवाड़ी टारगेट कीजिए, आप ताथड़ में बेचने वाले हो तो डांगे चौक टारगेट कीजिए, चिंचो टारगेट कीजिए. बट हमने देखा सांगवी में सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है हमारा. बट हमने देखा चाफेकर चौक में सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है हमारा. देन बट ये आया कैसे? ये हमारे डैशबोर्ड से पता चला, ये पावर BI की मदद से पता चला. ये हमने ये जाना कि नहीं, डिजिटलाइजेशन, अभी आपको जस्ट एक डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, संगीता मोबाइल्स बोल के उनका काम है. चेन्नई नॉर्थ ईस्ट साउथ में ज़्यादा काम है. 800 ब्रांचेस है उनके मोबाइल के, 800 ब्रांचेस. दे आर बिगर देन एप्पल देयर. उन लोगों ने फेस रिकग्निशन तक, आप उनके स्टोर में अगर कोई कस्टमर आता है तो इतने टेक्नोलॉजीज लगाए हैं कि ये कितना रिपीटेशन में आ रहा है. कस्टमर को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, A, B and C. तो एक कस्टमर के कैटेगरी, जैसे कि वास्तु वाले ने बताया कि ये चीजें होनी चाहिए, वैसे डिजिटलाइजेशन में उन्होंने कस्टमर की कैटेगरी डिवाइड कर दी है. ए कैटेगरी को यही सेल्स मैनेजर हैंडल करेगा, बिकॉज ये सेल्स मैनेजर का डैशबोर्ड में रेशो सबसे बेहतरीन है. सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है, आपके टीम के बारे में भी, उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी, जो आपको ERP ही बता सकता है. आज भले ही आपको ये एक्सपेंस लगने वाला है, बट ट्रस्ट मी, इसके सिवाय आप बढ़ ही नहीं सकते हो. डिजिटलाइजेशन इज़ दी ओनली सोल्यूशन. आज हम क्रिसाला में AI का मैंने 12 लोगों की IT टीम बनाई है. लोग हंसते थे मुझ पे जब मैंने IT सेक्टर, जो मेरे इन हाउस में IT डेवलप करना शुरू किया था, कि इतना पैसा आप IT में क्यों डालते हो. मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर किए, बहुत सारी चीज़ें नई ट्राई करने की कोशिश की, कुछ ERPs जमे नहीं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपका टीम आपको 100% अपोज करेगा, क्योंकि उनके लिए ये जो ट्रेडिशनल सेल्स है वो बहुत ईजी है. बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि अपना विजन अपने टीम में डालना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपका विजन है, आपके फर्म को बड़ा करना है, तो आपके एम्प्लॉयज़ को करना ही पड़ेगा. तब जाके हमने रियलाइज़ किया. अभी तो हम AI ला रहे हैं हमारे क्रिसाला में. 12 लोगों का टीम हो चुका है IT का. 6 लोग स्पेशली AI के ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या क्या हम और इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस चीज़ों पे हमने फोकस करना चाहिए, और रैंडमली कुछ काम नहीं करना है. जैसे अभी हम मुंबई में हमने अभी जस्ट साइन ऑफ किया, नागपुर वी आर गोइंग. डिजिटलाइजेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपांड योरसेल्फ वर्ल्ड वाइड. अगर आपको भी कहीं और जाना है, पुणे छोड़ के कहीं माल बेचना है, डिजिटलाइजेशन इज़ दी ओनली सोल्यूशन. UGC, कस्टमर्स बिहेवियर पैटर्न्स, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड पूरा डिजिटल पे आ चुका है. हर आदमी डिजिटल पे आ चुका है. जो बायर लेना भी नहीं चाहता, डिजिटलाइजेशन जैसे मेटा हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए सारे, ये उनको ऑटोमेटिक पुश करते जा रहे हैं कि आप लो. जो इम्पल्सिव बाइंग्स है वो सब शुरू हो चुकी है. तो आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन. ग्रेट सर, ग्रेट. Thank तरुण you. सर, एक्चुअली आज का जो क्लाइंट है वो क्लाइंट सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं चाहता, उसका एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसको एक एक्सपीरियंस मिले, उसको वो फील आए. तो गोयल गंगा ग्रुप में अभी तक और इसके आगे आपके क्या प्लान है? ऐसे जो नए अपग्रेड क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनके ऐसे एक्सपेक्टेशंस है, तो उनको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है? So I think आपने एकदम सही कहा. I think now the client cares more about experience. उनको legacy, brand, इससे ज़्यादा I think experience लगता है. There are a lot of new players who are coming, setting up very good sales offices, creating a very good sales flow, and they're still able to perform because the client is
न्यू क्लाइंट, मतलब माइग्रेट करके काफ़ी लोग आ रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइम होम बायर्स लुकिंग टू अपग्रेड. एंड आई थिंक इट्स पहले हमेशा से इमोशनल माइलस्टोन रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इमोशनल माइलस्टोन इन एनी पर्सन's फैमिली. बट आई थिंक इन टुडेज एज इट्स बिकम इवन मोर ऑफ एन इमोशनल माइलस्टोन फॉर पीपल कमिंग एंड कमिंग एंड सेटलिंग इन पुणे. तो इसमें आई थिंक सेल्स एक्सपीरियंस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें like Akash sir said, even in this I think digital tools are something that will really help, because when the client comes to the site उनको I think टच एंड फील और विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. दे डोंट वांट टू इमेजिन एनी मोर. मतलब पहले था कि ऑफ द प्लान ब्रोशर दिखा के यू कुड हैव स्टिल सोल्ड द फ्लैट. बट एज एन ऑल टेक्नोलॉजी आ गई है. देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज वेर यू कैन शो देम द एग्जैक्ट फ्लैट इन द बिल्डिंग, हाउ इट विल लुक, दिन में कैसा दिखेगा, कौन से दिन के टाइम पे कैसा दिखेगा. एंड इससे आई थिंक उनको एक ईज मिलता है ऑफ विजुअलाइजिंग कि मेरा जब भी घर रहेगा, how will it look and how will it feel to stay in the house. And usme again now sample flat becomes a very important thing, where they want to experience that sample flat and imagine their home inside the sample flat. अभी बीच में कोविड के टाइम पे आई थिंक बेयर शेल, कट सेक्शन वगैरह चल रहा था. बट नाउ एवरीवन, even if it's a mid-segment residential project, they want a very lavish sample flat because they want to imagine कि ऐसा मेरा घर दिखेगा. And उसमें I think one of the biggest things is a lot of them are first time home buyers, but a lot of them want to bring parents. They're starting a new chapter in their life. So, and this becomes like the biggest emotional milestone where their entire family is involved. So जब भी पूरी family involved हो जाती है, more than the actual buyer, उनकी पूरी family को experience से काफ़ी फ़र्क पड़ता है. Like if जब भी वो अपने wife के साथ आते हैं and you're able to show them कि आपका kitchen ऐसा exactly दिखेगा, आपके किचन में एकदम माइनर आपने कुछ उनको अगर डिटेल दिए, आपका ड्राई बालकनी एकदम अलग से दिया है, सेपरेट ड्राई बालकनी दिया है, उनको कवर ड्राई बालकनी दिया है, स्लाइडिंग विंडोज वगैरह के साथ, ये सब स्मॉल डिटेल्स भी उनको फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दे विल बी द वंस एक्चुअली यूटिलाइजिंग द हाउस. तो वो फुल एक्सपीरियंस आई थिंक मैटर्स मोर देन एवर इन दिस टुडे सिनेरियो. एंड इवन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कैसे व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आर वर्किंग. उसमें आई थिंक डिजिटल टूल्स आर समथिंग दैट विल पिक अप फास्टर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज डिजिटल टूल्स से जो विजुअलाइजेशन मिलता है वो आई थिंक यू कांट रिक्रिएट अदरवाइज. अभी फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैड टू जस्ट यूज़, अभी जैसे नेविगो करके नया टूल जो आया है, उसमें आई थिंक यू एग्जैक्टली कैन शो देम एमिनिटीज़, कौन से एंगल से कैसा दिखेगी आपका फ्लैट में, दिन में रात में कैसा दिखेगा, आपका व्यू क्या रहेगा, आपका फ्लैट एग्जैक्टली किधर रहेगा. सो आई थिंक दीज थिंग्स matter more than ever now. Great, sir. Prashant sir, your MNC clients and corporates, तो सर इनके साथ डील करते वक्त कौन सा अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कैसे इनको टैकल करते हैं, क्योंकि MNC clients and corporates are the people who are the big deals. तो ये इसके लिए आपका अप्रोच कैसा होता है पर्सनली, आपके सेल्स टीम का, या फिर आज कोहिनूर में एक क्या फिलोसफी है इस सब चीज़ों के लिए? Yeah, before that, a very interesting point that was saying. Okay, so I want to just take a reference to a question which was asked by Jeff Bezos when he was starting Amazon, and then he put the best of the minds together, saying that, okay, the internet changed, and then now it is going to be an app world. How is it going to change? What are the things that will change? And there were 100 points which these people came up with. Finally, after all that, Jeff Bezos asked one question: what will not change? Can we focus on that, right? Now, this customer experience or a satisfaction is something which is going to be forever, especially AI, brilliant presentation. Now, AI to agentic AI is coming, and it's like, they can talk like human, walk like human, do everything as much. But coming back to the question, so see, it's not selling anymore, it is solutioning. You have to find what exactly is the requirement of the customer, because each one is unique. You think we can tailor make everything and then adapt them to you. Rather, you should adapt, because if you don't adapt, then you are already behind.
It's very important to provide those kind of solutioning and understanding their pain points. What are they really looking for? And especially in commercial real estate, our normal standard leases are about 9 years. So you'll have to think at least 9 years, and then they renew. If they renew, then it is 18 years. So are you able to think 25 years? Now today, people can't even think, okay, what is going to happen next day, or I mean that's the rate of change. But for multinational companies, what is very important, which at Kohinoor what we believe in, is that if they have an office in Frankfurt or a San Francisco or a Singapore and in Pimpri or a Mundua or wherever we are building, they should not feel the difference between that. So do it very, very well from a product level. And the other very, very fundamental thing, because time is, the clock is ticking. So fundamental thing, I think at times of uncertainty, two things if you do very well. If you are in product industry, do your product very, very well. Kohinoor believes in that. And if you're in service industry, do your service very, very well. At least that will keep you afloat. That's what we believe in. And hence, all of our product are minimum of AAA grade category. And then we say, okay, fine, we have the best of team in place and best of services that we offer. That's how we do the basics right, and then we build it up. Great, sir. Divya ma'am, you are into marketing, और marketing में एक टीम बनाना कितना ज़रूरी होता है आज, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता पाए? Should I answer? It says time's up. Yeah. We have the time. Okay. So thank you for the question. I think team तो बनाना easy है, right? We have a strong HR department जहाँ पे एक JD करके चीज़ होती है, where you say job description, right? You tell what should be the qualification, age, communication, experience. You get a team. But making a strong team is relatively a little challenging and takes time. It can be fun though, So I think one thing which is very important for me is कि आपके जो goals हैं, business goals, वो team को पता रहने बहुत ज़रूरी हैं. Right? Usually क्या होता है, marketing team को पता रहता है कि monthly 1,000 leads, 200 walk-ins, 30% conversion. That's the performance matrix I'll follow, and हो गया. But जब तक company को brand vision, brand goals, sales targets, sales objectives, inventory flow, ये सब चीजें नहीं पता रहेंगी, they will not be able to outperform. So if I know the big goal, automatically वो छोटे goals सारे cover हो जाते हैं, right? That's one of the things. Second thing is training, of course, and training development and monitoring with motivation. So training is something I usually tell everyone that, I learned from my 9-year-old daughter. I actually learned Marathi from the office boys that I worked with, right? So learning can never stop, Learning can happen every minute, every moment, every day. So learning and development is something you can identify आपके employees में क्या lacking है, उसके relatively आप उनको training दे सकते हैं. Motivation में incentives, perks, benefits are extremely important. Next thing is, of course, core skills, which is marketing आनी चाहिए, right? Marketing is a very varied field. हम लोगों को लगता है marketing is ATL, marketing is digital, right? It's not just that. Marketing में बहुत सारे concepts होते हैं. There is brand development, there is strategy, there is niche, robotic and agentic AI. There is digital, there is influencer strategy. There's so much more. There is SEO, analytics. Like, everybody said, analytics is the god. It is the way ahead. Without that, forget sales or marketing. Nothing can move forward. Unless you know your customer, you will not be able to sell to your customer. So I think that is also very important. Next, I would say local knowledge. If I hire my team from Delhi and tell them to work in Pune, right? नहीं हो पाएगा, जमेगा नहीं properly, right? So I think local knowledge is also extremely important so that you can make your team work better and in a seamless way.
Always maintain a balance, I would say. If your team comprises of 5 people, 4 people, have people who have niche specializations, right? Somebody should know content, somebody should know SEO and digital, somebody should know execution, so that interdependency is very good. Another point I would like to say is communication and collaboration. Usually teams mein kya hota hai, they're very scared when they talk in front of the management, right? They do not open up their ideas in front of the leaders. So we have to be like a river. We have to be very free-flowing and versatile, where people can share their ideas. जहाँ पे knowledge sharing होगी, जहाँ पे brainstorming होगा, वहीं पे solutions निकलेंगे, out of box ideas आएंगे. And at the same time, एक human being के 3 needs होते हैं, right? You should be seen, you should be heard, you should be valued. If these 3 parameters are met, कोई भी इंसान खुश रहेगा और खुश रह के हमेशा आपकी productivity और बढ़ती है. So I think apart from the technology integration part, for me, these are the basic core skills and basic criteria which can make not just a very strong marketing team, but a very strong team in general. Thank you. Great, ma'am. Time allow करता है? Done? एक क्वेश्चन लेते हैं. Okay. Thanks all the panelists. आज ये जो इनपुट्स जो आपकी तरफ से मिले, डेफिनेटली चैनल पार्टनर्स के लिए ये बहुत बड़ा टेक अवे है, क्योंकि आज आकाश सर ने जो बोला, गोयल सर ने बोला, प्रशांत सर ने बोला और दिव्या मैम ने जो बोला, ये जो ऐसे पॉइंट्स है कि ये डेडिकेटेडली कोई चैनल पार्टनर को यहाँ तक अप्रोच नहीं मिलता है कि वो जाके यहाँ पे आके आपसे डिस्कस करे या आपसे आके इन सब चीज़ों के बारे में जाने. तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब चीज़ें पॉसिबल है. तो थैंक्स सर. Thank you so much. Thank you so much for the insightful session and the panel discussion. Now it's time for the felicitation, and for the felicitation, I request our Secretary, Kirti ma'am, Chairman, Kishan Milane sir, and our President, Darshan sir. Please come ahead for the felicitation. We'll start with the felicitation one by one. I request them to felicitate Mr. Akash Agarwal sir. A huge round of applause for him. Next, we'll felicitate Tarush Atul Goel. First, Mr. Akash Agarwal sir. A huge round of applause. Thank you so much. Mr. Tarush Atul Goel, Director, Goel Ganga Group. A huge round of applause. And as we all know, felicitate करते वक्त on behalf of मीरा ठक्कर वास्तु ब्लेसिंग्स की तरफ से बहुत ही प्यारे से गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं. You'll be getting the Nazar crystals and also crystal tree. Next, Prasant Gopinath, Director Commercial, Kohinoor Group. A huge round of applause. Mr. Prasant Gopinath. तालियां हो जाए एक बार जोरदार तालियां. Next, Divya Pradhan, Branding Head, Rohit Group. Thank you so much. And finally,
Mr. Abhijit Sabharwal, moderator and representing CPs. Okay. The chocolate hero of channel partners, Abhijit Sabharwal sir. Chocolate hero of prop 2025. Thank you so much, all of you. Thank you so much for the insightful session. We'll be taking a group photo. Okay, so yes, everyone, what a super spectacular and wonderful session we had here. And now it's time to cheer up for yourself. So when we say hip hip, you have to say hooray for the loudest way. So here we go. And 3, 2, 1. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Superb. Thank you so much for being such a fantastic audience of this day. So we are done with the education and interactive session, and finally it's time for vote of thanks. And for the vote of thanks, I request Mr. Ramesh Toshniwal sir to please come ahead. Thank you so much, all of you, for the panel discussion. And now it's time for the final session, the vote of thanks, and I request Mr. Ramesh Toshniwal. सर जास्त वेळ नाही घेणार, फक्त अर्ध्या मिनिटात. सर लास्ट 3.5 hours amazing sessions, and thanks all to all our channel partners, because एंटरटेनमेंट में सर 5 घंटा भी बिता सकते हैं. अगर टेक्निकल सेशन में हमने कन्वेंशन भी अटेंड किए हैं सर, लास्ट में सिर्फ 10 या 15 लोग बैठते हैं. यहाँ पे पूरा अभी भी अपने सभी चैनल पार्टनर्स बैठे हैं. थैंक यू वेरी मच. प्रॉप की ओर से आज के एजुकेशन सेशन किए और इंटरैक्टिव सेशन में को सफल बनाने के लिए हम सभी चैनल पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं. मुख्य अतिथि श्री सतीश दादा मगर जी, सम्माननीय श्री रवि वर्मा जी, हरीश श्रॉफ सर, इन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ. एआई ने जो शुरुआत की और ये ग्राफ ऊपर के ऊपर बढ़ता गया, मैं श्रीपाल गांधी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. और नवनीत मानधने, ये तो मेरे एकदम फैमिली फ्रेंड है, और पिछले जब मैंने 7 साल पहले बिजनेस शुरू किया, मेरा लोगो और मेरा न्यूमरोलॉजी का पूरा काम उन्हीं के मार्गदर्शन पे हो रहा है और काफ़ी अच्छा हो रहा है. सो थैंक्स ऑल टू नवनीत सर. एक फ़ोन के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि रमेश जी आ जाऊंगा, वो इटसेल्फ मेरे लिए बहुत अच्छा ये था, क्योंकि उनके ऑनलाइन सेशंस एवरी 30 मिनट्स का एक सेशन होता है. इसके साथ साथ मैं सभी जो अरेंजमेंट बैक स्टेज की अरेंजमेंट कर रहे हैं, केतन ठक्कर सर और वो पूरा टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और साथ में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं. हम लोग 6:10 पे सर लेक्चर्स वगैरह हो गए, अभी एजुकेशनल हो गया, अब एंटरटेनमेंट का टाइम है सर. एंजॉय करेंगे. 6:10 को नीचे हाँ इसी हॉल में मिलेंगे. और उसके पहले आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नीचे फूड काउंटर के वहाँ पे, जहाँ पे हमने दोपहर का खाना लिया था, बहुत ही स्वादिष्ट हाई टी का अरेंजमेंट किया है. और प्लीज़ हाई टी के बाद में सभी स्टॉल्स पे एक बार विजिट कीजिए. और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए पुराने गाने, किशोर रफ़ी के रंग, प्रॉप के संग, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है. इसके बाद हास्य जत्रा है, बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी एंजॉयमेंट है. धमाल करेंगे. थैंक यू वेरी मच.